Meenuji. Good evening, everyone. Welcome to this 8th day of the 8th Mavin Spiritual Festival. And welcome all. Let's learn a lot of things today, dealing with our shadows. And first of all, we'll start off with what message the angels have for this 8th day. So I welcome you back, Nupurji. Over to you. Thank you, Meenuji, for giving me opportunity to read a card from light, and it has been created with the help of light. And our theme, Mavin Festival theme is of light. So this card gives us messages from divine light, and I'm taking out one card for today's session to keep and bring in so much of light, so much of beautiful emotions and happiness. So let's see what our card says. Our card says protection. Call back your power, cut the cords and soul retrieval. And it so much connects with our theme of today, shadows. Yes. And light. So you need protection. You need to, connect to your soul so that you can come out of your shadows. This is what the card says. And I'm so grateful to Divine Light that it is really helping me to check and to connect to the card. And the card comes out right, connected to the theme. Thank you very much. Over to Meenuji. So yes, thank you so much for helping us to emerge from the darkness, from those shadows. The angels are giving just the appropriate message that we need for today. Thank you, Nupurji. So we move on to our the sessions today. But before that, I would like to introduce our star power for the evening, Sonal Parihar. With an MBA in marketing, she has chosen to be an actor by profession and has many television shows to her credit. And even on the digital and the web series, she's got lots of them, ads as well. And she's done shows like Mahima, Shanidev, Fear Files, bade achhe lagte hain, my favorite. And she's an ardent Reiki and angelic healer, and plus a lightarian as well. So, and today she has obliged us by becoming our observer for the evening. So, Sonalji, you'll have to be very alert and listen to the speakers. Thank you so much. So that welcome. obliged word was too much for me. Okay. I'm the one who's obliged here. We are. Sweet welcome note. Thank you for joining us. Thank you. So I'll move on to the first speaker of the day, Indu Balaji. She is a certified Heal Your Life trainer, plus a life coach, a naturopath, a hypnotherapist, and she's had innumerable years of experience in helping people through counseling and based on mindfulness, emotional intelligence, and also through tarot and numerology. And today she is going to talk about how to integrate our shadow to attain our true potential. She's going to guide us on that. So welcome, Induji. Over to you now. Thanks a lot, Meenuji, and thanks a lot for to the team of Mavin for inviting me here today. It's really a privilege to be here always. So I took a gap from Mavin for my personal reasons. I was keeping very busy last days. So, but it's always a pleasure to meet you all and be at this platform. Thanks a lot. Thanks. So let us start with our topic today, integration of shadows. First of all, we should understand what shadows are actually. Before integration of anything, we should actually know, we should, understand what is shadow, what are shadows, and how it affects us. So I will start from there, and then we will come to integration parts. That's how the flow of today's session will be.
So allow me to share my screen. Just give me a second so that I can share my screen meantime. Sorry. I'm not a very, technologically worse person, so it's taking okay. time. It's Yeah. perfectly okay. Yeah. I hope you all can see my screen. Yeah, we can. Integrate your shadows. Yeah. Yeah. Okay, great. So I have just, minimized the camera so that minimize the gallery so that I can see my screen. So if you guys feel like asking anything or something, you can put in the chat box, or maybe we can take it later. So because I cannot see you all. So as you know, the topic is how to integrate our shadows to, attain the best possible the qualities which we have, right? So I'll start the session with a small story. So it's a story of two children, story of Rohit and Parul, right? So what happened, like today, like in we all have seen in our families that how we raise kids, right? So we always expect children to, be good. We always tell them to be good. So what message actually we give to the people, to the children, is that there are two types of people in this world, either good or bad, and we all should thrive to be good, राइट? सो दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, और उनके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो उनको गुड या बैड बनाते हैं. तो वी व्हाट वी टेल चिल्ड्रन दैट always thrive to be good so that people will love you, people will, accept you. So Rohit was raised in a family where he was the youngest member of the family of 5 members were there in his family, and he was the youngest one. One day Rohit got scared of an insect and he started crying. So what happened? His grandfather told him not to cry like a girl, and he needs to be brave since he is a boy. Boys cannot be fearful, and he cannot be fearful of a mere insect. It's very girly thing. He should be brave, right? And so that's how he got some messages that I cannot be fearful. And the other day, what happened, Rohit, since Rohit is a small child, he wanted to be picked up by his father. See, so he goes to his father and he says, pick me up. And his father was busy in some office work or something. So, his father just tried to ignore him so that he can concentrate on his work. But Rohit become angry, and in his in his anger, he threw his notepad. So his father scolded him very badly for throwing this notepad, and then he tells him that being angry is a very bad thing. People will not like you if you become angry. So what message Rohit got that on those two occasions, that he cannot be fearful, he should not be girly, he should not be clingy, he should not be asked for emotional attachments, right? And he should not be angry. So then only he will be a good person, right? Because what we are training here, our children, is to be good, because there are only two type of people in this world. One are good, one set of people are good, and one set of people are bad, and he needs to be good. So growing up, Rohit also heard some stories of bad people land up in jail, and those people who are in jail, they are bad, they have done something bad. So एक फियर बच्चे के मन में बैठता है कि अरे कुछ गलत किया तो उसकी सजा मिलती है, उस सजा से बचने के लिए भी अच्छे बन के रहना है. Now let's see what was happening in
the other girl's life, Parul's life, right? So Parul की एक छोटी बहन है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एक दिन पारुल की एक आंट उनसे मिलने के लिए आती है और वो पारुल के लिए और उसकी सिस्टर के लिए कुछ चॉकलेट्स लाती है। तो Parul as a kid got tempted towards those chocolates. And while the adults were busy in chatting, Parul eats up all the chocolates. And her sister was sleeping at that time. When her mother gets to know about it, that Parul has eaten all the chocolates, so she scolds her. She tells her that she is very greedy and she is very self-centered. She didn't even think about her sister, that these chocolates belongs to her as well, right? So Parul really feel ashamed of, being so greedy, so tempting, and not being caring. So that day, Parul got a message that it's very bad to be greedy. It's very bad to have any desire, and it's very bad to think about our own self. We should always put others on before us, right? And the very same day, what happened, Parul's mom asked her to brush her teeth, which she ignored as a child. He was playing with her sister, and she just ignored that. And when she came to her mother tells her कि तुमने ब्रश नहीं किया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ. Now what message she got, that she should never be disobedient. Otherwise, there is a threat of losing people, right? अगर वो disobedient होगी तो she is a bad girl. So these messages were stored in these two children's subconscious mind. So अब इन दोनों बच्चों ने अपने एक इस सारे जो भी चीजें इनका कोपिंग मैकेनिज्म बना, उसकी वजह से क्या हुआ कि पारुल ने धीरे धीरे हर छोटी चीज पे झूठ बोलना शुरू कर दिया. मम्मी ने बोला हाथ धोए हैं, हाँ मम्मी धो लिए, जबकि नहीं धोए हैं, क्योंकि डिसोबीडियंट हम बनना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हमें ये लोग डिसोन करेंगे, हमें ये बोलेंगे कि अरे तुम तो अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम तो बहुत बुरे बच्चे हो. छोटी छोटी चीजों पे, जैसे एक बार कुकीज आई घर में और उसने अपनी सिस्टर को 2 दी और अपने खुद उसने 4 खा ली, और मम्मी ने बोला अरे ऐसे कैसे, तुमने 4 खाई हैं, उसने 2 खाई हैं, उसमें 6 कुकीज थी. तो बोलती है कि नहीं, उसमें 4 ही थी, 2 मैंने खाई हैं, 2 उसने खाई हैं, राइट? सो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजों पे पारुल स्टार्टेड लाइंग. बट व्हाट अनदर थिंग हैपेंड विद पारुल, दैट while growing up, उसने अपने नीड्स को छुपाना शुरू कर दिया. किसी भी चीज के बारे में उसने बताना बंद कर दिया कि मुझे ये चाहिए, राइट? वो सबमिसिव होने लग गई. अच्छा आप ही कर लो, ये आपके लिए पहले है. मतलब जहां पे जिस भी सिचुएशन में वो ये कर सकती थी कि जहां उसको वो अच्छा गुड गर्ल बन के रहना था, वहां पे नहीं नहीं आप पहले खाओ, ये तो आपके लिए है, आप ज्यादा ले लो. वो इस तरीके से बिहेव करने लगी. सो उसने अपनी सारी डिजायर्स को एक तरीके से एक्सप्रेस करना बंद कर दिया. ऑन द अदर हैंड, व्हाट वाज हैपनिंग इन रोहित्स लाइफ, रोहित वॉज बिकमिंग वेरी अनएक्सप्रेसिव. वो अपना पेन, अपना फियर उसने बताना बंद कर दिया. और क्योंकि उसको ये बोला गया था कि तुम तो एक लड़के हो और तुम्हें तो करेजियस बनना है, तुम्हें तो ब्रेव होना चाहिए, इंसेक्ट से थोड़ी डरना है तुम्हें, उस करेजियस बनने के चक्कर में he started bullying other children. So this was happening in Rohit's and Parul's life. Now, can I ask you, ask you all, can you relate to this? Is it happened in anyone's of life? क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्या हम भी आज अपनी नीड्स के लिए बहुत ही अनएक्सप्रेसिव हैं? क्या हम अब खुल के अपनी बात कह पाते हैं? क्या हमें डरने से भी डर लगता है? अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है, किसी चीज के खोने से डर लग रहा है, तो क्या हम उसको एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा? या हम उसको मास्क करते हैं,
what these children started doing, जो भी उनका ये डिसोबीडियंट था वो उन्होंने लाइन के मास्क में छुपा लिया, ये उन्होंने मास्क करना शुरू कर दिया, अपने फियर को करेज में मास्क करना शुरू कर दिया, बुली करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से ही इज अ फियरफुल पर्सन, और फियर तो बैड क्वालिटी है, वो उसको बैड बनाता है और उसको गुड बनना है। इसके लिए उसने एक करेजियस होने का मास्क बनाया और उसके लिए उसने बुली करना शुरू कर दिया, राइट? सो कैन एनीबडी रिलेट टू इट? Just show of hand, just it will give me a signal, yes, I am my all these talks is making sense, right? So Yes. thank you. Yeah. So अब हमारे लिए अब हम आते हैं कि ये शेडो क्या है। ये तो हो गई कहानी, अब ये शेडो क्या है, हाउ दिस शेडो इफेक्टेड अस। सो whatever quality, when we start labeling it good or bad, we started labeling it, right? गुस्सा होना बुरा है, करेजियस होना अच्छा है, सेल्फ अपने आप को दूसरों से नीचे रखो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी टेम्पटेशन के लिए गिव अप कर देते हो या आप किसी बात का कहना नहीं मानते हो तो वो बुरा है। तो क्वालिटी वही है, ओबीडियंस, लेकिन आप मानोगे तो आप ये अच्छी क्वालिटी है, आप नहीं मानोगे तो ये बुरी क्वालिटी है। गुस्सा अपने आप में एक क्वालिटी है, लेकिन अगर आपने इस समय पे दिखाया तो ये गलत है, इसको दिखाया तो गलत है, नहीं तो वैसे तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, ये एक अच्छे इंसान की पहचान है जो शांत रहता है। तो एक क्वालिटी को जब हमने लेबल करना शुरू कर दिया कि वो गलत है, वो सही नहीं है, वो तो खराब की पहचान है, या वो अपने आप में ही खराब है, ऑल टुगेदर गुस्सा खराब है, तो ये हमारी शेडो है। क्योंकि बाय नेचर हमें सबको गुस्सा, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और अपने बारे में सोचना, ये सब हमें बाय नेचर मिला ही हुआ है, राइट? लेकिन जब हम उनको दबा देते हैं क्योंकि हमें अच्छा इंसान बनना है, इन क्वालिटीज के साथ हम अच्छे इंसान नहीं हैं, तो जब हम उनको अपने अंदर दबाना शुरू कर देते हैं तो ये हमारी शेडोज बन जाती हैं। और इनको जब हम दबाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, हम मास्क करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि कैसे पारुल ने अपने किसी भी डिसओबीडियंस को लाइन में दिखाना शुरू कर दिया, वो झूठ बोलने लग गई हर चीज में, या फिर वो सबमिसिव हो गई, या रोहित जो था वो बुली करने लग गया अपने फियर को छुपाने के लिए, राइट? तो उसने डिसोन कर दिया टोटली कि आई कैन बी फियरफुल, he disowned that thing that I can be fearful, I can be lazy। मतलब अभी ये मैं इसलिए बाकी क्वालिटीज बोल रही हूँ क्योंकि ये हम लोगों के साथ हम जनरलाइज कर रहे हैं अभी स्टोरी को, राइट? हम कभी अगर कोई हमें बोल दे तुम लेजी हो तो देखो बस कैसे बोल दिया उसने हमें कि हम लेजी है, कैसे तुमने बोला कि मैं अपना काम टाइम पे नहीं करता हूँ, राइट? बट दीज आर द क्वालिटीज। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर अगर हमें कोई बोलता है कि तुम लेजी हो तो हम उसको या तो बहुत ज्यादा काम करके दिखाएंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हम लेजी नहीं है। तो ये जो जिस भी चीज को हम डिसोन करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये मैं नहीं हूं क्योंकि ये बैड क्वालिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेबलिंग। जैसे ही हम किसी क्वालिटी को लेबल कर देते हैं, ये गुड है या बैड है, अभी हम इस पे आ रहे हैं कि कोई भी क्वालिटी कैसे गुड या बैड नहीं होती है, राइट? तो अब मास्किंग, डिसोनिंग, धीरे धीरे हम शट डाउन करने लगते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने से। बहुत सारी विमेन इससे रिलेट कर पाएंगी, वैसे तो मैंने मेन भी देखे हैं ऐसे जो कि बिल्कुल शट डाउन होते हैं, वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है इट्स बेटर टू बी क्वाइट। उन्होंने बोला तो लोग बोलेंगे अरे लड़कियों की तरह बोलता है, ये तो लड़कियों की तरह रोता है, ये तो हर बात को, क्योंकि वो सारी कंडीशनिंग, वो सारी डिसोनिंग हो चुकी है उनकी, राइट? एक और चीज आती है बहुत ही मजेदार, ब्लेमिंग। वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल अराउंड अस। तुम्हारी वजह से तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, तुम्हारी वजह से तो मुझे गुस्सा आता है, तुम्हारी वजह से। सो हम इतने इनटॉलरेंट बन जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को इतना शट डाउन कर लिया है, इतना दबा लिया।
सो व्हाट वी डू, वी ईदर वी मास्क, मतलब प्राइमरली हम दो ही काम करते हैं, या तो हम मास्क करते हैं या फिर हम और अच्छा बनने के लिए वो क्वालिटीज को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, राइट? या तो मास्क करेंगे कुछ और करके, या फिर हम ऐसे करेंगे कि अच्छा तुमने लेजी बोला, अब मैं ज्यादा काम करूंगी, राइट? तो या हम दूसरे एस्पेक्ट में चले जाते हैं, ईदर वी स्टार्ट एक्वायरिंग मोर और वी जस्ट मास्क इट। मैं तो ऐसी हुई ही नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई पेशेंट बंदा ही तुम्हें नहीं मिलेगा दुनिया में। मैं कभी गुस्सा करती हूँ? बहुत रेयर होता है मुझे गुस्सा आता है, जब बिल्कुल मेरी हद हो जाती है ना तब मेरे को गुस्सा आता है। ये सब आम डायलॉग्स हम सुनते हैं दिन भर में, जबकि और जबकि उस गुस्से का अपना एक वैल्यू है, वी आर कमिंग देयर व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, राइट? सो आपने कभी वो पूल बॉल देखा है जिसको आप जितना सप्रेस करते हो वो उतने प्रेशर से ऊपर आता है, राइट? सो दिस इज आवर शैडो। टू अंडरस्टैंड शैडो, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वी जस्ट पुल डाउन आवर इमोशंस सो मच, हम उनको दबा के रखना चाहते हैं, हम दिखाना नहीं चाहते कि मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी जेलस होती है किसी से। बहुत कॉमन है, हमें जेलस होती ही है। कोई ऐसा इंसान है नहीं जो ये बोल सकता है कि मुझे किसी से जेलसी नहीं होती। लेकिन अगर आप पूछोगे आर यू जेलस ऑफ हर, नो नो नेवर, हाउ कैन आई बी जेलस, आप यही बोलेंगे सबसे पहले। बट इट्स अ वेरी नेचुरल क्वालिटी। जैसे आपको आंखें मिली है, आप देखोगे ही, आप यू कांट हेल्प इट। अगर आपने ह्यूमन लाइफ लिया है, आपको ये जन्म मिला है, तो ये सारे इमोशंस, ये सारी क्वालिटीज आएंगी, बट वी हैव जस्ट पुश देम डाउन। मैं तो जेलस होती ही नहीं, मुझे तो किसी से जेलस नहीं है, राइट? सो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जेलसी, फियर, ग्रीड, लेजीनेस, एरोगेंट, केयरलेसनेस, सेल्फ सेंटर्ड, यू आर मीन। कोई कह दे हमें यू आर मीन, देखो फिर देखो उसका क्या बैंड बजाएंगे हम कि तुमने कहा कैसे हम मीन है, राइट? जबकि वी ऑल आर, वी ऑल आर। इट्स जस्ट दैट वी डू नॉट नो व्हेन एंड हाउ टू यूज इट, राइट? सो हम उसको दबा के रखते हैं। अब इसका एक और साइकिल आ रहा है। जैसे ही मुझे लगता है गुस्सा होना खराब है, अब कोई गुस्सा होता है, अरे वो तो बहुत गुस्से वाली है, उसका तो गुस्सा नाक पे ही बैठा रहता है, इतनी चिड़चिड़ी है वो तो, इतनी एरोगेंट है वो तो, इतनी हाई हेडेड है वो तो, राइट? हम इस तरीके से फिर, क्योंकि अब हम उन क्वालिटीज में जो हमने एक्सपीरियंस करी है दबा के, अब हम उसी के बेसिस पर सबको जज करते हैं। पैरामीटर कहाँ से बनते हैं? अगर मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी एक पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं 5.6 इज अ गुड हाइट फॉर अ गर्ल, लेट सपोज, ये पैरामीटर बना है ना पहले कहीं 5.6 हमारे माइंड में, तो गुस्सा खराब है, पहले ये बना है, फिर हम किसी को बोलते हैं अरे तुम गुस्से वाले हो। तो हमने पहले वो एक पैरामीटर सेट कर लिया सारे इमोशंस का, ये इमोशन अच्छे हैं, 2 डब्बे बनाए, ये सारे इमोशन गंदे हैं, ये सारे इमोशन अच्छे हैं, जो जिसके पास ये है वो इंसान खराब है। बहुत सिंपल, क्योंकि पहले हमने 2 डब्बे बना लिए, एक को अच्छा बनाया, एक को बुरा बनाया, और अपने वाले बुरे वालों को होते हुए भी हमने दबा दिया, हम तो ऐसे हैं नहीं। अब हम सबको अपना अच्छा अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामने वाले का चेहरा हमें दिखता है ऐसा, तो हम बोलते हैं तुम ऐसे हो। एंड बाय द वे, अगर आप किसी से पूछेंगे ना, वो सारे इमोशन जो आपने दबा रखे हैं वो 100% बताएंगे आपके अंदर है, क्योंकि वो हम दिखा ही देते हैं, वो हमारे सामने आते ही आते हैं। You cannot stop it because it's a pool ball. अब जितना प्रेस करोगे वो उतने जोर से ऊपर आएगी। हम अपने मन में उसको कितना भी डिसोन कर ले, हम कितना भी बोल दें हमारे अंदर नहीं है, बट इट विल कम। सो ये हो गया इसका दूसरा साइड कि अब हम जजमेंटल हो गए। अब हम किसी को भी देखते हैं, एक जजमेंट ऐसे तुरंत पास होता है, यूं मतलब तैयार ही बैठा था वो बाहर आने के लिए, राइट? उसके बाद एक इसकी मेटाफिजिक्स साइड भी बताती हूँ आपको। इसकी मेटाफिजिक्स साइड ये है कि जितना आपने सुना ही होगा, क्या बोलते हैं हम फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में, कि जैसा आप वाइब्रेट करते हो ना, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो। अब मैं तो हूँ फियरफुल और उसको मैंने दबा लिया और मैं जजमेंटल हो रही हूँ लोगों के लिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई विल अट्रैक्ट इन माय लाइफ?
ईदर फियरफुल और जजमेंटल। वो मुझे लेके जजमेंटल होते रहेंगे, या मैं कहूंगी यार ये भी ऐसा मिला, एक और मिला, मेरा कलीग भी ऐसा है, मेरा भाई भी ऐसा है, मेरी बहन भी ऐसी है, मेरा पति भी ऐसा है, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, मेरे तो सारी दुनिया, मेरे तो आसपास सारे ही लोग ऐसे हैं। बिकॉज दैट्स हाउ आई अट्रैक्टेड ऑल दोज पीपल इन माई लाइफ। ये क्वांटम फिजिक्स का एक वो है, मतलब कि आप जैसे वाइब्स में होते हो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। फिर हम ये क्वालिटीज लोगों पे प्रोजेक्ट तो करते ही हैं, क्योंकि यही है हमारा देखने का तरीका। तुम ऐसे हो, तुम ही ऐसे हो, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा थोड़ी आता है, ये तो तुम हो जो गुस्से वाले हो, और ये तो तुम हो जो मुझे गुस्सा दिलाते हो, राइट। सो ये शेडोज का गेम इस तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि फिर करना क्या है। भाई समझ आ गया, हमारी तो गलती भी नहीं थी, हमें तो गुड बैड का डब्बा शुरू से बता दिया गया था, और उस गुड बैड के डब्बे में हम तो अननोइंगली चीजें डाल रहे थे, जैसे राहुल और जैसे रोहित और पारुल डाल रहे थे, जैसे बच्चे थे। हमारी भी तो अपब्रिंगिंग वैसी ही हुई है। हम क्या बचपन से इतने वाइज थे? मतलब हम क्या बचपन से सफेद बाल लेके पैदा हुए थे? नहीं ना, हम भी तो बच्चे से बड़े हुए और सब चीजों को देखते हुए बड़े हुए, राइट। तो अब तब तो पता नहीं था, तब तो गुड बैड के डब्बे में डालते गए चीजें, और उसी हिसाब से हमने अपने शेडोज बना लिए, और फिर जजमेंट्स भी हो गए, और प्रोजेक्शंस भी हो गए, और ट्रिगर्स भी हो गए हमारे। कोई हमें बोलता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी हमें पता है, व्हाट टू डू। सो नाउ कम्स द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ शेडोज। What is the goal of shadow work? Nothing but integration with acceptance. How sweet. समुद्र मंथन तो सबको पता होगा आई गेस। यहाँ पे समुद्र मंथन में अमृत के साथ, रतन के साथ विष भी निकला था। क्यों निकला था ये विष? क्योंकि उस विष की भी हमें जरूरत है। अगर मैं अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई वैसे ही अपनी बात शेयर कर रहा था कि हाउ स्ट्रगलिंग सम टाइम वाज इन हर लाइफ when her husband was going through a very severe lungs problem and he was not able to breathe. So she was telling the story कि क्या हो रहा था मेरे साथ, and her husband was admitted in AIMS. And she says कि एक उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी कि ये मेडिसिन ले आओ मैडम, ये यहाँ नहीं मिलेगी, मतलब हमारे पास हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आपको मार्केट से खरीद के लानी पड़ेगी। She says that I went to the market, बहुत लंबा मैं घूम घूम के कहीं तो पहुंची, मतलब वहां पे एम्स के पास वैसे बहुत सारी शॉप्स हैं मेडिकल स्टोर्स, लेकिन किसी स्टोर पे वो दवाई नहीं मिल रही थी, और किसी एक स्टोर पे जाके दवाई मिली, और वो दवाई थी 2.5 रुपए की एक। एंड शी सेज, मैंने उसको बोला कि भैया इतनी सस्ती दवाई है, ये हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं रखते, और कोई दुकान वाले ने नहीं रखी हुई, मतलब मैं इतनी दूर चल के आई हूँ तब मुझे आपके पास मिली है। उसने बोला ये ना आप अपने डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा आपको। she goes back to the doctor and she asks, ये क्या 2.5 रुपए की दवाई के लिए आज आपने मेरे 2 घंटे खराब करे, मतलब not exactly this word, but ऐसा क्या है इस दवाई में? He said, मैडम ये ना पॉइजन है, हम आपके हस्बैंड को जो ये देने वाले हैं ना मेडिसिन, इसके बाद ना उनके लंग्स में एक मेम्ब्रेन बनेगा, अगर तो ये दवाई उनको इफेक्ट कर गई तो वो मेम्ब्रेन बनने लगेगा। आई डोंट नो इफ समबडी हियर इज फ्रॉम एनी मेडिकल फील्ड, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेडिसिन उनको देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद वो इनके लंग्स में एक मेम्ब्रेन बनेगा, जिसकी वजह से उनका ये जो थोड़े समय के लिए हम उनकी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड सिंस इट्स अ पॉइजन वी कैन नॉट कीप इट इन द हॉस्पिटल, सो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही मिलता है, और आपको तभी वहीं मिलेगा, किसी किसी स्टोर पे मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये पॉइजन ना होता, चाहे वो इतना सा ही चाहिए था, क्या वो ठीक हो पाते? बहुत सारी मेडिसिन में वी नो वी यूज हेवी मेटल्स, वी नो वी यूज पॉइजन्स, बहुत सारी मेडिसिन में हम यूज करते हैं। उनकी जरूरत थी हमें, एंगर की जरूरत है हमें कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। हम सब अपने एंगर को सप्रेस करते हैं, है ही नहीं जी, मैं तो बहुत शांत, मेरे को तो आता ही नहीं गुस्सा।
और हम दूसरों को भी जज करते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं। हमें एंगर की जरूरत है या नहीं? अगर एंगर होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता होता, तो क्या होता? तो क्या होता? हम अपनी बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर पाते, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे लिए किस किस लिमिट के बाद हमें बोलना है बस, या कब हमें नो बोलना है। अगर एंगर नहीं होता, मतलब एंगर नहीं होता, तो शायद लड़ाइयां नहीं होती या फिर हमें आजादी भी नहीं मिलती। सारी चीजें, इवोल्यूशन ही नहीं होती हमारी एज अ ह्यूमन। अगर हमें किसी चीज के लिए बुरा ही नहीं लगेगा, हमें लगेगा ही नहीं कि ये एक खराब प्रैक्टिस है, और हमें उसके लिए हमारे हमारे खून में वो आएगा नहीं बॉयल, हाउ विल वी रिवोल्ट अगेंस्ट दैट? ट्रू। तो एंगर की अपनी एक क्वालिटी है, जैसे पॉइजन की एक क्वालिटी है, वो हमें ठीक भी कर सकता है। इट्स ओनली अबाउट how we are using it. I came across a very good line that we should be able to do things which we wouldn't do. This is the quality of our shadows. हमें वो आना तो चाहिए ना, we should be able to do those things which we wouldn't do. So so let's suppose I am able to hurt somebody. But if I am not hurting somebody just because I am fearful of hurting him, this is not morality. I know I am able to hurt you, but still I am choosing not to hurt you. That is the real power. Isn't it? अगर मैं अपने फियर की वजह से किसी को आवाज नहीं उठाऊंगी, लेट सपोज मैं बोलती हूँ कि आप बोल रहे हो जो मर्जी, लेकिन अगर मैंने आवाज उठाई तो तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही। लेकिन on the other hand, I understand from where this person is coming. And now from that understanding, I know if I say something, he will get hurt. But I am capable of saying that, but I am choosing not to say that. This is the real power. Right. I should be able to do things which I would not. मुझे गुस्सा तो पता होना चाहिए क्या है, मैं यूज करूंगी कैसे, उसको कहाँ करूंगी, that is a separate story. Sorry. So अब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हर शैडो का एक गिफ्ट है। जैसे अभी हमने एंगर का समझा, एंगर नहीं होगा तो हमारी बाउंड्री सेट नहीं होंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या चीज ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए, नो कब कहना है। एंगर होने से हमें समझ में आएगा, हम अपनी बाउंड्री सेट कर पाएंगे, राइट? ऐसे ही ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वालिटीज विच आई थिंक आर माई शेडोज। जो मैंने हमसे बेहतर हमारे इनर वर्क कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। दिस इज द बेस लाइन। वी नीड टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, then only we will be able to do our inner work, right? So ऐसा क्या है कि जो मेरे अंदर है, जो मैंने दबा रखा है, it could be jealousy, it could be greed. मुझे one of my mentor used to say, जब मैंने काम करना शुरू किया था, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे शी इज अ बिच। वो कभी समझती ही नहीं है, उसका पेट ही नहीं भरता, उसको कितना भी मिल जाए। तो शी सेड I accepted it. Okay. I know I am a bitch. I know I have a greed. Now what? लेकिन जब तक वो उससे लड़ती रही, नहीं 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 नहीं, I am not greedy, I am not greedy. What she was doing? There was a internal conflict going on. She accepted herself rather than in her own self suppressing that. No, I am not dying. मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं ग्रीडी हो सकती हूँ? ये इतनी महान हस्ती, ये ग्रीडी कैसे हो सकता है, राइट? हम यही तो सोचते हैं ना अपने बारे में, हमारे जैसे तो कोई नहीं, राइट? तो मैं कैसे ग्रीडी हो सकती हूँ?
तो मैं तो ग्रीडी नहीं हो सकती, इसलिए मैं फिर लोगों को बताती हूँ, नहीं नहीं देखो अब तुम भी ग्रीडी हो, देखो तुम, वो ग्रीडी नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है, हम यही तो करते हैं ना। लेकिन जिस दिन वो कहती है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पता है, मुझे अपने मन में पता है कि मैं ग्रीडी हूं या नहीं, ये मेरा ग्रीड कितना है जो मुझे कितना इफेक्ट कर रहा है। पर वो कहती है ग्रीड की एक बहुत ही पॉजिटिव साइड थी, इट मोटिवेटेड मी टू डू मोर वर्क। वो ग्रीड नहीं होता तो मैं और काम क्यों करती, खाओ पियो सो जाओ बस। शायद वो ग्रीड ही तो था जिसकी वजह से मुझे वो मोटिवेशन मिल रही थी टू वर्क मोर। isn't it isn't it a good quality of being a greedy? So we need to understand what are the good qualities of any so called bad quality जिसको हमने shadow बना लिया है, right? So there are couple of techniques which we generally practice while I take personal sessions, but for sake of this platform और अभी यहाँ पे मैं जो भी वो बताना चाहूंगी जो हम conveniently कर सकते हैं सब लोग, right? Without any supervision. बाकी supervision के साथ तो there are a lot of tools and techniques, but अभी के लिए मैं 2 exercises बताऊंगी. If you really want to note it down, you can note it down because it will help you, right? So list out all the qualities you have, negative or positive. Be honest. Be honest with yourself. सारी क्वालिटीज को लिख लीजिए, और क्योंकि अब पॉजिटिव क्वालिटीज तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव क्वालिटीज के साथ सो कॉल्ड, बाय द वे अब कहने के लिए, ये समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जैसे हमने बोला ना समुद्र मंथन में विष भी निकला था तो उसकी भी जरूरत थी, तो आप विष को नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना, राइट? तो वो सारी क्वालिटीज को जब आपने लिस्ट आउट कर लिया, तो आप सो कॉल्ड नेगेटिव क्वालिटीज के लिए ये जरूर लिखिए साथ में, हाउ इज इट हेल्पिंग यू? As we discussed about anger, greed, right? So write it down. How is it helping you? I can stop sharing now, I guess. I finish with the presentation. Okay. ये तो हो गई एक एक्सरसाइज। अब ऐसे ही सेम एक्सरसाइज आपको किसी और ऐसे पर्सन के लिए करनी है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करता हो। लेट्स सपोज मेरा ब्रदर मुझे बहुत ट्रिगर करता है, उसके अंदर कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, और वो नेगेटिव क्वालिटीज उसको कैसे हेल्प कर रही हैं। सो लेट्स सपोज ही इज अ लेजी पर्सन, लेट्स सपोज। अब ये लेजीनेस उसको कैसे इफेक्ट, उसको कैसे बेनिफिट कर रही है, लेजीनेस का क्या बेनिफिट उसको मिल रहा है? मे बी ही नोज हाउ टू मेक पीपल वर्क फॉर हिम। हम में से कितने लोगों को आता है अपना काम डेलीकेट करना, और कितना करना चाहते हैं हमें, क्योंकि बन के दिखाना है ना कि हम तो बहुत करते हैं, हम ही सारा दिन कर लेते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आई एम अ सुपर वुमेन, राइट? पर डेलीगेशन कैसे आता है हमें? जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा होगा ना बिस्तर में से निकलने का, उस दिन मैं सारे काम डेलीगेट कर लूंगी। सो बीइंग लेजी हैज इट्स ओन क्वालिटी। सो हाउ दिस बीइंग लेजी इज सर्विंग हिम? So list out all those benefits which that shadow is giving him. वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आप कितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं, जो जो आपको ट्रिगर कर रहा है आप उसके साथ कर सकते हैं। सो कहीं जजमेंट रह जाएगा, फिर इसके बाद कहीं जजमेंट रह जाएगा किसी और के लिए या अपने लिए। अब आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 पार्ट थे। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? जितनी भी ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटीज आपने अब तक बनाई है, लेट्स सपोज ये सब मिलके 50 हो गई हैं सबकी, मेरी भी मिला के, और जिन 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 लोगों की मैंने बनाई क्वालिटीज लिस्ट करी है वो 50 हो गई हैं। स्टार्ट सेइंग आई एम लेजी, वेदर यू फील यू आर और यू आर नॉट। इफ यू आर प्रोजेक्टिंग इट, यू आर, बाय द वे, राइट? Say it. I am lazy. I am lazy. I am lazy. I am jealous. I am jealous. I am jealous. Till that time उसका इमोशनल या उसका चार्ज खत्म हो जाए, और इन अदर वर्ड्स once you start accepting it
yes, I am lazy. जब आपको लगे कि yes, I am lazy, आप जब ये एक्सेप्ट कर ले, तब तक आपको उसको बोलना है. जब उसका चार्ज खत्म हो जाए, मैं कैसे लेजी हो सकती हूँ, ऐसे कैसे मैं अपने आप को बोल दूं, कोई मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी, जब तक हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैशनलाइज करते रहेंगे, तब तक आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया. जब वो रैशनलाइजेशन बंद हो जाए आपके माइंड में, इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दैट शैडो, एंड इट्स दैट इज इंटीग्रेशन. और जब ये इंटीग्रेशन खत्म होगा, तो जैसे अभी हमने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, आप जब जजमेंटल नहीं हो, आप ट्रिगर नहीं हो रहे, अब आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया आप लेजी हो. अब कोई बोल दे दुनिया में आपको आप लेजी हो, आपको फर्क पड़ता है? आपको कोई बोल दे आप जेलस हो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. आप गुस्से वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हूँ, ठीक है, चलना, अच्छा तुझे भी पता है, ओके, वेरी गुड. Isn't it fun? कितना इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, राइट? और जब आप ऐसे इस उसमें रहेंगे, हाँ भाई हूं ना गुस्से वाली, हाँ हूं ना ग्रीडी हूं, तभी तो इतना काम कर रही हूँ, रात को 9:30 बजे मैं भी जा सकती हूँ फ्राइडे को पार्टी करने, राइट? ग्रीडी हूं, किसी भी चीज की ग्रीडी हूं, नाम की ग्रीडी हूं, पैसे की ग्रीडी हूं. इट्स ओके. अभी क्या ट्रिगर होंगी क्या मैं इसके बाद? और जब मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मेरी वाइब चेंज हो जाएंगी, तो मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी अपने आसपास, मैं कैसी चीजें अट्रैक्ट करूंगी अपने आसपास? गेम चेंज हो गई पूरी. Isn't it? That's all from my side. That was a super awesome session, Indu Balaji. Thank you very Opened our eyes to a lot of things. Yeah, actually we all have. जब मैंने सुनना सोचना शुरू किया था, तो मुझे लगा वाओ क्या चीज है ना ये, हम मतलब कितने इग्नोरेंट हैं हम, कितनी छोटी सी चीज है. अरे यार है भाई, 10% पॉइजन लेके तो भगवान ने भी किया है, वो बनाया है, सृष्टि बनाई है, राइट? तो मेरे अंदर है, तो अगर मुझे बस, मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो मैं मानना नहीं चाहती कि 10% है मेरे अंदर, दूसरा उस 10% को यूज करना नहीं आता मुझे. वो 10% 90% हो जाता है क्योंकि मैंने इतना दबा रखा है. लेकिन अगर मैं उसको 10% के फेज में ही मान लूंगी, वो 90 बनेगा ही नहीं ना, पुश कर करके. Right. Yeah. So, okay, we'll take the questions later on, Vinay. I'm sorry, because we're already crossed the time limit since it was so interesting. Sorry. So it's okay. So we'll take the questions later on. I'm sorry. So I invite Vijay Mehra sir now, and he's been an electronic engineer throughout his life, but now he's totally into sessions for the past 15 years, and he's done thousands of them. Working mostly in the past life regression area with the NLP techniques also, how to release the negative energy and emotions stored in our body. And today he's going to talk about how to get out of the shadows of past life. So I invite sir to take the floor now. Good evening, everybody. It's very fun talking to you people. इंदु जी ने कुछ चीजें बड़ी अच्छी बोली कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ. जब हम कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे में कमी है, तो उसके बाद जो एक्सेप्टेंस होती है तो कहानी बदलनी शुरू हो जाती है. ऐसी कहानी हमारी पास्ट लाइफ की है. हमारे इनसाइड आवर सबकॉन्शियस, एट द बॉटम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द माइंड कॉल्ड प्रिमिटिव माइंड, जहाँ पिछले जन्मों के सारे रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं. We can read them, we can't change them. However, the perspective attached to it can be changed. I like to issue one warning. The effect of a past life can manifest in our life in many different ways, but it should be used as a tool, not as an excuse. Unfortunately, a lot of people start using an excuse. Please don't do that. अब होता क्या है कि हमें पुरानी बातें पिछले जन्म की याद नहीं है, पर क्या होता है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, वो कहीं ना कहीं हमें आज जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी के कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है. इफेक्ट ऑफ पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों की जो इफेक्ट है, इट मैनिफेस्ट लेटर ऑन इन द लाइफ टाइम इन मेनी डिफरेंट वेज. फोबिया, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, फिजिकल प्रॉब्लम, सम इनट क्रिएटिव एबिलिटीज. अच्छा, कई बारी जब डेथ हुई बड़ी बुरी तरह से, तो उसका वो ट्रॉमा, फियर, एंगर वगैरह सब यहाँ आते हैं. Now, what I'm going to do is now I'm going to share some cases which came to my mind, जो एक्चुअली मैंने केसेस किए, जो लोगों के कैसे उनको मदद मिली.
पहला केस मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेडी आई, शी वाज मैरिड, बहू थी परिवार में, और सास बहू की बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम चल रही थी दोनों की। केम की भी पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं अपनी सास से बहुत लड़ाई होती है हम दोनों की। मैं एक बोलती हूँ, दो बोलती है, फिर मैं दो बोलती हूँ, चार बोलती है। ओके, वी सेड लेट्स सी व्हाट इज इट। वी डिड अ सेशन, लेट्स गो बैक टू लाइफ टाइम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। शी फाउंड द रोल्स वर रिवर्स्ड। शी वाज द mother-in-law and the present mother-in-law was the daughter-in-law, and she made her life miserable. Now what happened? अब उसको समझ आ गई मेरे साथ क्यों हो रहा है। So why me do something different? How can I get out of it? धीरे धीरे उसको समझ आ गई कि मैं मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस उसको समझ आ गई कि मैंने ये किया इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने धीरे धीरे कम कर दिया, बोलना कम कर दिया। 3 महीने बाद सासू माँ ने देखा कि तो बहुत कम बोलती है, उन्होंने कम करना, बोलना कम कर दिया। एंड 6-7 months later they were best of friends. Very simple, nothing great about it. अब एक और आपको किस्सा सुनाऊंगा कि there's a lady who came. She was in mid-40s when she came to me, and very male-looking female. अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि मेल है। Very strong lady, very very strong. Her parents died quite early. She didn't marry. उसने अपनी छोटी बहन से उसकी शादी करी। उसका 2 प्रॉब्लम थी, rather 3 प्रॉब्लम थी। एक तो था उसके पेट में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दर्द होती थी। 15-16 साल से वो डॉक्टर के पास जा रही थी, कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा था क्यों पेन होती है। दूसरा क्या होता था कि शी वाज वर्किंग, एंड इन अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स पीपल यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम हर, और ये किसी को मना नहीं कर पाती थी। एंड जब इसका पैसे नहीं होते थे, किसी अपने दूसरे फ्रेंड से बोरो करती थी, नोबडी यूज्ड टू रिटर्न द मनी टू हर, नेवर। एंड थर्ड देयर वाज द प्रॉब्लम, शी हैड अ अस्थमा प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक ऑफ फर्स्ट 2। ये तीनों हमने उनके, मैंने काफी सेशन किए। एक सेशन में क्या निकला, शी वाज a male, a boy somewhere in UP. At a very young age, this boy ran away from home. यूपी बिहार से कहीं से था, ये मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंच के इसने शुरू हो गया जी, 13-14 साल में पहुंच गया था, गुंडागर्दी में शुरू हो गया, जॉइंट अ डॉन, पिस्टल दिखा के पैसे वसूल करता था, राइट। उसी लाइफ टाइम में क्या हुआ, एट द एज अबाउट 35-36, द फाइट बिटवीन 2 गैंग्स, एंड दिस बॉय वाज शॉट on the left side of the stomach and died. So what we did, we said, leave the pain with that body down there. You don't have to bring it back here. After that, the pain finished. And she got her answer कि why जब मेरे से लोग पैसे मांगते हैं, क्यों मेरे से पैसे मांग रहे हैं? She knew, her soul, now she knew that's what is happening. Third, जो मैंने आपको बताया उसकी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो भी क्या था कि एक और लाइफ टाइम में गए, मेल अगेन, somewhere in राजस्थान, and कोई किंग के बेटे थे, 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटा था ये उसके भाई ने इसको पकड़ के, वो राजा बनना चाहता था बाप के जाने के बाद, उसको पकड़ के अंडरग्राउंड केबिन में उसको बंद कर दिया था, डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन, सो केम इनटू दिस लाइफ टाइम। तो क्या है कि इट्स वेरी स्ट्रेंज। आई मीन आई विल टेल यू अनदर केस व्हाट हैपेंड। इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू कम टू मी क्वाइट ऑफन। हिज वाइफ यूज्ड टू टेल मी कि मेरे को सेशन कराना है आपसे। मैं कहा कभी मिलेंगे तो करा लेंगे। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया, बार बार ये आया कि मुझे उनके घर जाना चाहिए। आई डिसाइड टू गो in the morning one day. We're staying very far away from where I'm staying, in the West Delhi. I went and ended up at that place. She wanted to go to the session. That lady is a principal in a public school. Okay, उसके लेफ्ट लेग में बड़ी दर्द होती थी, बड़े सालों से दर्द है, नहीं समझ आती क्या है। So lined up there, we did a session, and it turned out she was living somewhere up in the hills in the past lifetime. वो नदी में वहां पे कहीं नहा रही थी, मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली, and she died there. We said, leave the pain there with the body. You don't have to bring it here. And the pain finished. अब उसे पूछो, मैंने पूछता हूँ भाई क्या हुआ पेन का, कहती वो तो उस दिन खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा हुई नहीं है। मेरे पास एक बंदा आया जी, ही वाज अ वेरी बिग टाइम मल्टीनेशनल का सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये 2 kids, 1 boy and 1 girl. The young girl was younger, and उस बच्ची का ऐसा था कि she was very religious. कहीं घर में पूजा होनी, सबसे आगे बैठना है। कहीं पे पड़ोस में कहीं पूजा होनी, दादी को बोलना दादी चलो, या माँ को बोलना मुझे लेके चलो पूजा के लिए। Imagine at the age of 3, 4, 5, this kid was like this. But what happened at the age of about 5 or 5.5,
उसको ऐसी डिजीज हुई which happens to 1 in a billion person. The whole immunity system in the body breaks down. This kid was taken to this Apollo hospital and doctor said we can't save her. The kid died. उसके parting words to her parents were, मम्मी पापा मुझे आपके साथ इतना टाइम गुजारना था और नहीं गुजारना था. Chapter closed. Now this guy couldn't get out of it. He tried to commit suicide number of times. 3-4 times he tried to commit suicide. Once उसने अपनी बीवी को और बेटे को घर से भगा दिया, पर पता नहीं कैसे, और घर में अपने पंखे के ऊपर लगा के रस्सी लगा के बैठा हुआ था. बीवी को टैक्सी नहीं मिली, क्या हुआ, वापस आ गई. नहीं हुआ. He came to me for a session. He had gone number of other places, but anyway he came to me. When we went into the life where this all happened, he saw himself अब बनारस के कहीं आउटस्कर्ट्स में. He says कि मैं एक ओके बैलगाड़ी चला रहा हूँ, लकड़ियों के लॉक से भरी हुई है, मैं अकेले हूँ. बोले नहीं, कोई बैठा हो मेरे साथ. कौन बैठा है? बच्ची बैठी है, लड़की बैठी है. मैं कौन है? अरे ये तो बोला, अच्छा ही वाज अ मुस्लिम इन दैट. वो लड़की का नाम था शबनम. कहता है इसका नाम शबनम है, ये तो मेरी बेटी है. चले जा रहे हैं, वेरी हैप्पी. सडनली स्टार्टेड क्राइंग. अच्छा व्हाट हैपेंड? एक बड़ा सा पत्थर आ गया था और वो पत्थर के ऊपर से पहिया गुजरा तो बेटी मेरी नीचे गिर गई और पहिया उसके गर्दन के ऊपर गुजर गया. शी डाइड. उसने उसकी बेटी को वहां पे उसने जंगल में वहीं पे कहीं खेत में गाड़ा उसकी बॉडी को. केम होम, ही यूज्ड टू फाइट विद हिज वाइफ. दोनों मियां बीवी में बहुत झगड़ा होता था. इन दैट लाइफ टाइम ही कमिटेड सुसाइड. व्हाट हैपेंड? द ट्रेट्स इन दिस लाइफ टाइम. then we went to life within life where उस बच्ची की आत्मा को बुलाया. That soul was the angel. She says in that lifetime also, in this lifetime also, I came to change his path, and I had to spend only that much time. So बड़ी it's very very strange कि क्या होता है. एक और केस बता दूं मैं आपको. एक लड़की आई मेरे पास, very rich family, and केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हुए क्लास 11 में her face got burned because the beaker burst, acid की beaker. Face got totally burned. Had to go through massive amount of plastic surgery. Now she wanted to know why it happened. Finally she got married. उसका एक छोटा बच्चा था. अपनी मॉम को और अपनी छोटी बच्ची को लेके आई थी. And we were sitting in the same room and mother भी बैठी हुई थी, बेटी को उन्हें पकड़ा हुआ था, उसका सेशन कर रहे थे. I said let's go back to a lifetime where it all started. I said who are you? Are you a male or a female? Answer came male. कैसे कपड़े पहने हुए हैं? जूते के मैंने जूते पहने हुए हैं. कपड़े कैसे पहने हुए? खाकी यूनिफॉर्म पहनी है. क्या हो रहा है? Where are you? Germany. What's happening? We are at war. I'm a Nazi German soldier. I said let's go back to the scene where it started. She says I don't want to share it. I said when you get your answers, come back. I think all of us can guess as a Nazi soldier what that soul must have done in that lifetime, right? You guys agree with me? We can guess it, right? Yes, yes. एक और केस बताता हूँ. मेरे एक पास्ट लाइफ के क्या होता है कि जो हमने सीखा वो हमारे साथ वापस आता है. मेरे एक फ्रेंड है मेरे दलबी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं. ही स्टेज इन नोएडा. तो एक दिन कहते हैं मैं मार्केट में घूम रहा था तो उनको एक पुराना अपने यूनिट का सूबेदार मुझे मिल गया. तो उससे पूछने लगा अभी क्या है क्या नहीं. उसने बोला मैं भी यहीं नोएडा में रहता हूँ. वो एक वहीं गाँव में जहाँ पे पक्के मकान बन गए, अर्बन विलेज में रहता था. कहता जी मेरा बेटा है, मुझे बहुत तंग करता है, 25 26 27 साल का हो गया, काम कुछ नहीं करता है. कहता फिर क्या करो? कहता उसे भेजो मेरे पास. वो आया, बेटा उनका आ गया इनके पास, मान गया भाई, लेके आ गए बेटे को. नो व्हाट हैपेंड, गांव में जो भी कोई मकान बनाता था ना, वो इसको कंसल्ट करते थे कि बिल्डिंग कैसे बनानी है. एंड दिस गाय वाज प्रीटी गुड एट इट. ही यूज्ड टू टेल देम एंड ही यूज्ड टू वर्क वेल. जो इसको कंसल्ट नहीं करते उनका मकान ठीक नहीं बनता, साला टूट जाता. व्हेन हिज पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाज डन, he went into a previous lifetime, he was a civil engineer, British civil engineer. That means that learning had come forward in this lifetime. तो उन्होंने उसको बोला भी एक काम करे, तेरे पास डिग्री तो है नहीं है, तू किसी सिविल इंजीनियर को पकड़ ले, एक कंपनी खोल ले, क्योंकि he can sign the papers right on your behalf. And he did, he's doing very well. तो हम सबकी लर्निंग बड़ी पास्ट लाइफ की, पिछले जन्मों की लर्निंग हमारे साथ आती है. एक और किस्सा बताता हूँ जी. मेरे पास आए हस्बैंड वाइफ, अलग अलग टाइम पे आए. खूब झगड़ा होता दोनों में, बहुत ज्यादा झगड़ा. एंड दोनों के सेशन अलग अलग किए. इट टर्न आउट दैट दे वर टुगेदर, हस्बैंड वाइफ, फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. Especially the wife went back to the time, she says कि we are living in caves and I am in the cave
दिस पर्सन, वो बाल भी बॉडी पे बाल भी थे, क्योंकि वो गया है बाहर से खाना लेने के लिए, मीट वगैरह जो भी लेने के लिए, और केव के सामने बड़ा सा पत्थर रख गया. दैट गाय नेवर केम बैक, शी डाइड. पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठे थे. उनका यही था कि एक दूसरे से रहना सीखना, नहीं सीखा उन्होंने. इस जन्म में उन्होंने बाय द वे दे वेंट टू द ओके डिवोर्स. द लर्निंग, अनलेस वी लर्न द लेसन वी कीप गेटिंग रिपीटेड. दैट्स द थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये बहुत जरूरी है हम सबको ये जानना कि ये ऐसा होता है. इन द केस आई विल शो यू, आई टेल यू समथिंग मोर. रिटायर्ड फॉरेन ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर था, एंड ही वाज अराउंड 63, 64. वो अकेले रहते, दो बेटी थी. एक बेटी उनकी कहीं मोहाली में रहती थी, एक दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में रहती थी. ही वाज स्टेइंग इन ओके रेंद्र नगर. अकेले रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे सर्वेंट के साथ. तो एक दिन उनके सर्वेंट ने बोला, भी कहता है जी रात को आपने, उसने रात को किसी औरत को देखा होगा घर में. उससे उनको सुबह बोलता है, तूने रात को सर आपने किसी औरत को घर में बुलाया था? उसको थप्पड़ मारा, साले मैं सुबह में किसी औरत को बुलाऊंगा घर में. वो चले गया. नेक्स्ट डे फिर आया, जी मैंने देखा है उन्होंने सिर पे पल्लू किया हुआ, हाथ में दिया है. मैं पीछे के जाने की कोशिश करी तो गायब हो गए. इट वेंट ऑन फॉर नंबर ऑफ टाइम्स. देन दे this guy's daughter contacted somebody. They came to know कि there are some soul in their house. So he called me up for a session. I said, देख मैं आपका नहीं कर सकता हूँ, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपकी बेटी का कर सकते हैं. मैंने कहा I'll come. मैं उनका घर गया, उनकी बेटी थी, उसका हस्बैंड था, और ये थे तीनों. सेशन करते ही शुरू में पता चल गया कि उसकी मदर की आत्मा जो है, उनकी उस लड़की की माँ, मतलब जो आईएफएस ऑफिसर, उसकी वाइफ जो है, वो 6-7 साल पहले ओके शी क्रॉस्ड ओवर. आई थिंक शी हैड कैंसर और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज इट. After dying, her soul didn't go up. It was stuck here. Which is when I invited her to talk to me, she started telling me, ये मेरा पति अकेला है, इसका ख्याल कौन रखेगा अगर मैं ऊपर चली गई तो. तो मैंने उनको समझाया कि भाई ऊपर जाके मदद कर सकते हो. काफी टाइम लगा. फाइनली शी एग्रीड टू गो अप इनटू द लाइट, एंड आफ्टर दैट nobody saw anything there. There are sessions when we take people to life within life, in between a lifetime. That's where we do the forgiveness, the cord cutting, so that some of the karmic debt can be finished, so that they don't have to bring it back into this lifetime. There's a case which came to me. उसके बंदे के गले में बहुत दर्द होती थी. 6-7 साल से दर्द होती थी. सब कुछ चेक करा लिया, और सांस की भी दिक्कत होती थी. समझ नहीं आती क्या हो रहा है, डॉक्टर कोई नहीं बता पाया. When you did a session, it turned out in the previous lifetime this guy died because he took poison. Again, same thing. You don't have to bring that emotion this lifetime. Leave it with that body. And that's it. It changed. In a couple of days' time, he found isko dawai khane ki zarurat hi nahi. I'm all right. So miracles are happening. But remember that we need to use the past life regression in a proper way. Unfortunately, what some people tend to do is they keep living that life. No, आपको learning करनी है. हम वो देख सकते हैं क्या हम किया, हम उसकी learning सीख सकते हैं, उसको हम उसका perspective attached to it can be changed, but we cannot change the past. And जो हमने बोया है वो उगेगा ही. जो हमारे कर्म है वो हमें काटने पड़ेंगे, हम कुछ भी कर लें. अभी recently a case I think I shared last time. There was a lady who came to me. She's a PhD. उन्होंने PhD किया हुआ है. She is a psychiatrist. She works for Ministry of Defense in Delhi. And she got married. Her husband was Air Force officer or something. किसी वजह से बनी नहीं, divorce हो गया. Husband somehow उसने retirement लेके वकील बन गया. उसने इसके against cases कर दिए. 59 cases various courts in Delhi and around Delhi, UP, Haryana, Delhi, इधर उधर कर दिए. 59 cases. And every week there used to be one date, literally. She was miserable, eating antidepressant drugs all the time. And it took her from first call, when she called me up that she wants to go to a session, it took her about a year to come to me. Because probably the karmic debt was not to be finished as yet. First session के बाद क्या हुआ? She was cool enough. She stopped taking antidepressant drugs. Then about 6-8 weeks later, we did another session. उसमें क्या हुआ कि देखो भगवान के हमारे कहते हैं शास्त्रों में दो रूप हैं, सगुण रूप, निर्गुण रूप. निर्गुण रूप is just light energy, right? And सगुण रूप is human life form. उसमें लाइट थी. The question asked from light कि कितने समय में ये कोर्स सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? Answer came 2 months.
Now, can any one of you imagine 59 cases 2 महीने में खत्म हुए हिंदुस्तान में? हाँ जी, आप सब मान सकते हैं, हो सकता है ऐसा? No. What happened? After about 6-7 weeks, I get a call from her. Uncle, शाम को फोन आया 4:30-5 बजे, मैं आज रात की गाड़ी से इलाहाबाद जा रही हूँ, ऐसे क्या हो गया? बोली मेरा केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चले गई, उसकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, फादर स्टिल लाइव। आई थिंक 11:30-11:15 में फोन आया होगा। ऐसे संध्या बेटी सब केसेस खत्म हो गए? अंकल हाउ डू यू नो? ऐसे वो तो बताया था ना लाइट ने। कहते हैं अंकल जज ने 2 लाइन का ऑर्डर पास किया, ऑल दिस केसेस ऑफ फ्रॉड दे शुड बी ड्रॉन इमीडिएटली, एंड ऑफ इट। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन कम टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन? इट्स अमेजिंग व्हाट कैन बी डन, बट वी नीड टू हैव पेशेंस। And physical issues, lot of physical issues can be cleared. और केस आपको बताना चाहता था। आप कुछ सवाल पूछना चाहोगे? मेरे से आप पूछिएगा पहले। आप conclude कर लीजिए, तो then we'll open the floor for any questions. Okay. Now I would like to tell you something more, that at times, as I said, in between the life between life we go, that time some divine beings come. Jesus Christ, Gautam Buddha, Devi Ma, Lord Shiva, Prophet Muhammad. And that time the huge amount of wisdom flows. The person doesn't even know what is he or she is saying it. And I have actually recordings of those, some of these audios which I've made. And that's where one gets tremendous wisdom directly from the horse's mouth. But then as I said, we need to have patience. You've got to be ready for it. You have to make yourself ready for it. अब आप पूछिएगा, बस मैं यही बताना चाहता कि PL, past life regression, if used properly, can help us a lot. And physical healing, itni, abhi recently एक केस हुआ मेरे साथ. There is a lady staying in Jaipur. Her husband, she was staying. Her husband had bedridden for 2 years. They were staying on the outskirts of Jaipur. They had a farmhouse जहाँ वो खेती भी करते रहते थे. Husband को पता नहीं क्या हुआ, एकदम bedridden. She got one daughter, and she told me कि I don't know how she came to know about me. She said, "Can you help me to heal my husband?" I said, "Yeah, we'll try." We did 2-3 sessions. Then after some time, one day I get a call from her. My husband is in the hospital. उनको कोई serious problem हो गई है. मैंने अच्छा try करते हैं. तो that lady is from Jaipur, right? वो जिंदगी में एक बार ही गई है वहाँ पे, अमृतसर, हरमिंदर साहब के गुरुद्वारे. That day when we did the session, her consciousness landed up there. I said, "Where are you?" She said, "I'm there." I said, "Why don't you call your husband here?" She said, "वो तो already बैठा हुआ बाबा जी के पास, उन्होंने अपनी गोद में लिया हुआ उसको तो." तो I said, "What?" मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहते वो कह रहे हैं मेरा बेटा है, मेरे पास आ गया, भूल जा इसको. 2 days later, husband expired. I didn't know how to reach out to her. Finally, I decided, let me talk to her. I couldn't understand when the session happened. So when I spoke to her, she was perfectly fine. She said, "I knew." वो तो उस दिन बोल दिया था बाबा जी ने, मेरे पास है, मेरा बेटा मेरे पास आ गया है. No grief, nothing. Very easily she was able to move on in life. Because she saw ahead of time, universe showed her that this is what is going to happen. तो अब कुछ चीजें मेरे को भी समझ नहीं आती हैं क्या है, frankly. And this session was done on phone. You will be surprised. I do most of my past regression sessions on phone now. कुछ नहीं होता, लाइन कट दे, कोई बात नहीं. I can call back and move further. Okay. Pause. Amazing, it's amazing. Huh. How to come out of the past life that just by changing the situation, that's amazing. हाँ, नहीं तो पॉइंट इज कि देखो क्या है कि देखो हमारे 5 शरीर है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था. फिजिकल बॉडी, नेक्स्ट इज द बायोप्लाज्मिक बॉडी व्हिच इज एनर्जी बॉडी, द थर्ड इज द इमोशनल बॉडी, फोर्थ इज द इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, मेंटल बॉडी, फिफ्थ इज गॉड, बिलोंग्स टू गॉड. व्हेन द पर्सन dies, the first body finishes immediately, second one takes couple of days. The rest of the 3, they are part of the soul, it goes. So that means every single learning, every single emotion I've created in my lifetime goes with me. Remember that. I mean, if I hate somebody, मान लो किसी ने मेरे से पैसे ले लिए और उसने मुझे पैसे, जो उसने बोला मैं टाइम फ्रेम में दे दूंगा, उसने नहीं दिए, मैं उससे मांगा, कहता मैं नहीं देता हूँ, क्या कर लेगा? मैं गुस्से में, मेरे को उस पैसे वसूल करने हैं, and I die with the thought कि मुझे I must get the money back from him. What will happen? I have to go back, then come back with him in the next lifetime to get the money back from him. This is what happens.
तो हम लाइफ को कॉम्प्लीट करते जा रहे हैं अननेसेसरली। जी जी। हाँ जी, पूछो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर Thank you, गया। sir. Thank you so much. So I'll invite Sonal to now take over and ask what she would like to. Please unmute, Sonal. Please unmute. Thank you so much, Meenu ji, and thank you so much, Indubala ma'am and Vijay Mehra sir. Both the sessions were fabulous, and again, I will say that I am fortunate that I got to attend this one. When I read the theme, actually the first thing that came in my mind, हमेशा जो हम करते हैं कि shadow means we see the dark part. Both the sessions for me were very unusual because अगर इंदुबाला मैम के सेशन के टाइम पर हंस हंस कर मुझे आंसू आए और मेरे जॉ दुख गए थे, तो सर के टाइम पे मैं पूरे टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, एंड आई वाज डूइंग ऑल दैट. One thing that I will say is, for both the sessions, what I gained out of it was acceptance. Whether आपके past life की जो चीज है and which is bothering you till this life, you have to accept it. और अगर हम मैम के सेशन की बात करें तो जो हम so called negative aspects कहते हैं, which are very much part of us, we have to accept it. It is just that we have to channelize the energy. Fabulous session. I will say I'm really thrilled. So as far as like my thing is concerned, मैं थोड़ी ज्यादा curious रहती हूँ, तो मेरे बहुत सारे questions होते हैं. So as far as ma'am's session is concerned, रोहित और पारुल का जो example था, I will say at times जब आप example से समझाते हो, it is a fabulous thing. And वो समझ में आता है, it is firstly you took it so well, it was very easy to relate everything. कि हाँ ये होता है कि हर कोई यही कहता है हम ही वाप है, कि मुझ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. दिस इज सो ट्रू. बट लाइक आई सेड कि मैं दोनों सेशन से जो एक चीज मुझे समझ में आई इज एक्सेप्टेंस. सो मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने स्टेप्स बताए वो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, अब आप पूछोगे अब करें क्या, वो एग्जैक्ट मेरा इमोशन था कि अब करें क्या. आपने इतना सिंप्लीफाई किया है इस चीज को कि जस्ट लिस्ट इट डाउन एंड सेड हाँ मैं हूँ, कैसे क्या करना है अब. सो वो ट्रिगर जो है वो चला जाता है. बट one question that I have here for you is कि as far as this trigger part is concerned, and I know it is very easy to say to accept, but at times it happens, जो आपने कहा कि सेल्फ एनालिसिस, कि हमें खुद पहले समझना होगा कि हाँ सोनल तुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं. हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली सी, जैसे आपने कहा कि वो एक अपब्रिंगिंग का होता है, तुम ये करो ये गलत है, ये है वो. आधे से ज्यादा लाइफ निकल जाती है समझाने में. जैसे मैंने अपने फादर को रिसेंटली अभी बोला है दिवाली के बाद, जब से मैं घर से बाहर आई हूँ, वेदर कॉलेज हो वोड़े, वो मुझे ये बोला था, बेटा वहां जो है ना वो उनके साथ अच्छे से रहना, बेटा वहां जो, बिकॉज तुम दूसरे शहर में हो, सो यू शुड हैव पीपल अराउंड. मैंने अभी उनको बोला आप ऐसे करके वीक कर देते हो. जो आपने कहा बाउंड्रीज सेट करना, हम ना वी नीड दीज पीपल, हम वो बाउंड्रीज गिरा देते हैं. सो व्हाट आई वांट टू नो इज कि ये जो आपने कहा कि जो आपके ट्रेड्स हैं, द सो कॉल्ड नेगेटिव एज पर अदर्स, और जो अपब्रिंगिंग की वजह से हमारे दिमाग में आ गई है, वेदर इट इज देयर और नॉट, हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि यहाँ पर मैं एक्चुअली अपने ट्रेड्स नोट डाउन कर रही हूँ, या इट इज लाइक पुट इनटू माय माइंड कि ऐसा है, यू आर लाइक दिस और दैट. See, I would say it doesn't make any difference because ultimately it's driving you. So आपने वो acquire किया है या वो आपके innate traits हैं, it's driving you, right? Right. और जब तक वो आपको ड्राइव कर रहे हैं, वो आपको आपकी फुल पोटेंशियल में जीने नहीं देंगे. Right. राइट. फियर Yeah, I get बाहर it. से आया या आपका इननेट था. That is my trigger point and I have to work on it. Yeah, that's Perfect. yeah. Okay. Yeah, Okay. yeah. Thank you so much. And sir, आपसे जो क्वेश्चन मुझे पूछना था वो ये था, पास्ट लाइफ के बारे में आपने जो बताया वो दो चीजें थी. एक तो जो आपने डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का बताया, या आपने वो बताया जो डॉन थे, उन्होंने जब देख लिया कि भाई मैं ये सब कर चुका हूँ, तो ये जो हो रहा है ये बनता है, सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. सो वो चीज इनके लिए इजी हो गई कि यार जो भी मेरी मदर इन लॉ कर रही है, पिछले जन्म में मैंने ये किया है ना, तो बनता है. या जो डॉन थे उनको समझ में आ गया कि भाई ये जो पैसे जा रहे हैं ना मेरे, ये पहले का हिसाब बराबर हो रहा है. दिस इज वन पार्ट. बट सर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि कोई एक चीज है कि आपको पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ लगी है चोट, या जो ब्रीदिंग इशू था
वो पता चल जाने के बाद आई जस्ट वांटेड टू नो दैट गोज अवे. सो द लर्निंग, जैसे आपने कहा कि पास्ट लाइफ का हमेशा एक लर्निंग. That's the key thing. See, what Okay. happens is कि जब आपको पता चल गया, what happens when we have a problem issue, we say why me, right? Now we know that why it is happening to me. Instead of why me, I'm looking for a solution. The mind shift, a subtle shift, change the mind, it makes all the difference. For why me to how to overcome this problem. So you get, once we get to know that this whatever problem I'm having, whether the breathing problem or any pain and all, it is Exactly. because this thing happened in my past life. So And then with the no, there's one more knowledge, thing. In or that we have to session, do something. in that session, we also do one thing, that emotion of that particular instant, what happened, you don't have to bring it on into the current lifetime now. Leave it to the body. There's a proper procedure. It takes me a couple of minutes to go through the whole process. उसके बाद छोड़ इसको त्याग दो उस बॉडी के साथ ही. यहाँ लाने की जरूरत नहीं है आपको. The emotions are left there with that body. That's it. Acha, okay. So we don't have to carry it forward to this life, Exactly, basically. exactly, Oh, acha, exactly. okay. Thank you so much. Thank both of you. It was a fabulous session. And thank you, Nupur ma'am. Thank you, Shabana ji, because of you too, I am here and I'm getting to know so much. And such a fabulous session it was. Thank you so much. And if anyone else is having any question, please go ahead. मुझे भी बहुत सारा और ज्ञान पता चल आ जाएगा. Anyone is having any question, please go ahead. Yeah, Vinay has raised his hand. Vinay, please unmute yourself. Oh, you asked me to come on video. No worries, I'll come on video also. So fantastically said it. And in fact, when Hindu was saying about coming and accepting your shadows, is also brings to the fact. I used to do an activity in my sessions that I ask people to write their past and consistently keep on writing the past and share with your partner about the past. स्टोरी पूरी लिख लो और ना बार बार अपने पार्टनर को स्टोरी सुनाओ. एक बार सुनाओ, बार सुनाओ, 4 बार सुनाओ, 10 बार सुनाओ, 20 बार सुनाओ. अब वो कुछ समय के बाद वो इतनी इरेलेवेंट स्टोरी हो जाती है, तो वो अपने आप ही वो हंसी आती है कि भाई मैं स्टोरी में बैठा हूँ, पास्ट जो चीजें लेकर के बैठा हूँ वो कैसे इतनी आसानी से मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, बिकॉज वो स्टोरी वाला जो गेम जो हम खेलते थे. तो इंदू की जो इंटीग्रेशन वाला जो पॉइंट है, आई जस्ट got present to the fact कि ऐसा केस हो सकती है. और yes, you keep on accepting it. Yes, I'm lazy. Yes, people have said, labeled me or blamed me and given me some wrong adjectives. So I'm a person who get triggered very easily when people say some words to me. But yes, after this session, I also found out that yes, मैं अपने आप को हाँ ठीक है मैं ऐसे ही हूँ, चलो ठीक है जी बढ़िया है. At the moment I say this is who I am and accept it, things goes on a different note altogether. So thank you, Indu, for really saying it. And Yeah, I would really like to add something here. It's not only about accepting, it's also acknowledging the fact that what quality or what gift this brings so-called up. negative Yes. quality has. Yes. So if you say I was ratios, coming to that. Yeah. So that's also something that I was working, because everything emerges because black board पे white chalk तभी आता है जब black background पे होता है. तो yes, integrating is very important. कि मेरी जो quality है वो तभी आती है जब किसी ने ऐसा कुछ कहा. And I realized it, when I have to be very honest here, that many times when my wife nags me and कई बार जब मैं उसको जवाब देता हूँ तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब मैं उसको एक्सेप्ट करता था मेरा बेस्ट सेशन जाता था, ट्रेनिंग सेशन. दैट वाज द बेस्ट सेशन because the quality of communication started getting expressed. So yes, these shadows do play a huge role in our lives. Hardly do we realize it. The acceptance really makes a huge difference. The second part of the PLR part that Mr. Sir, Vijay Mehra sir, I spoke with him on the call a few days back. I hope you remember, sir, that we had a very brief conversation. So yes, at that time you said, I don't know about PLR. I don't know why they were saying it, but now I realize maybe because you wanted me to get into my own contemplation mode. Then I really, जैसे में पता चलता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में उसका कोई कनेक्शन है और वो पास्ट लाइफ का एक जो सिनेरियो है वो एग्जिस्ट करता है जिंदगी में,
तो भले हमने सेशन लिया हो या ना लिया हो, वो अपने आप में एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग, और कुछ उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा हो, प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं मिल रहा, तो यही एक्सेप्टेंस की उसका कुछ कनेक्शन तो रहा होगा, तो वो अपने आप में एक रिलीफ मिलता है। तो दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, जो फर्स्ट सेशन इंदु ने लिया, जो आपने भी लिया। आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस द मोमेंट वी अंडरस्टैंड। उसको ऐसे भी समझते हैं, मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठे हैं और चेयर के नीचे बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है, और आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे मैं परेशान हूँ, ये कैसे तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो। किसी ने आया, वही उसने बताया तेरे चेयर के नीचे आग लगी हुई है, और जैसे वो चेयर के नीचे आग दिखता है, वो जंप कर जाता है अपने आप, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, पहले वो ब्लेम कर रहा होता है। So it is all about awareness moment. When I get aware that yes, there is a connection between the current life and the past life, so the whole thing is transformed. So really want to thank you also, and these sessions, as Sonar also said, really are very transformational session. Thank you very much. Thank you, Vinay, so much for that. And yes, Nupuji, you would like to ask a question? So it's a very enlightening session from Induji and Teji. Emotions, all the habits, all the notions. Yes, it is like you know, it is ingrained into us. I have clarified it very beautifully. Here, I would like to ask you one thing. Since we are adults, how do we connect with all these things? You have explained about so many notions, so many boundaries, so many, habits formation. How do we connect and how we come out of it? Nupurji, as I said, that first of all, start introspecting. What people say you. So what I do is, like, we always have a, few people around us which are very unbiased. We believe that they are giving us very unbiased opinion. So you take 2% and ask them to give a honest, unbiased opinion about yourself. If you are not able to introspect yourself, right? If you could, then it's perfect. Start with yourself only. फिर आप उन 2 लोगों से पूछ सकते हैं, और उन 3, 4, 5 क्वालिटीज जो भी वो आपको बताते हैं, एंड अगेन नेगेटिव पॉजिटिव कोटेड, राइट, वो क्वालिटीज को आप फिर आप उनके बारे में, जैसे जो एक्सरसाइज मैंने शेयर करा था, कि आप उनको देखिए कि उनके गिफ्ट क्या है आपको. Let's suppose if they say, Nupur, you just procrastinate. Let's suppose you just don't, reply on time. You just don't do anything on time. Now you have to see, okay, what are the gifts this procrastination is giving me? Right? Maybe it is giving you some leisure time, and also you finish your work on time as well. Like आप procrastinate करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कि मैं काम करती ही नहीं हूँ totally. राइट, डिले करके, मेरी ये प्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन शायद 15 मिनट पहले खत्म हुई है. आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर, जब से मुझे पता लगा आई नीड टू स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन दिस डे, आई टुडे ओनली आई वर्कड ऑन इट. बट व्हाट गिफ्ट इट हैज? आई प्रोक्रेस्टिनेट, राइट? मुझे तो बहुत 10 दिन पहले पता था कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना है, मैं 10 दिन पहले भी ये काम कर सकती थी, बट आई फिनिश माई अदर प्रायोरिटीज. And since today was the day, तो मैंने आज बैठ के वो काम कर लिया. But it's okay. It gave me the window to finish my other works, right? And it gave me a pressure as well. Somehow I am a person who can work under pressure. It's okay. I am accepting myself that I work under pressure. आप मुझे 10 दिन का टाइम दोगे, मैं 10वें दिन ही काम करूंगी. आप मुझे 1 महीने का टाइम दोगे, मैं 30th day ही काम करूंगी. Now I'm accepting it, right? And once I'm accepted, I will not be, triggered with it. So you need to understand what gift that quality has. Once you understand that, you will not judge it, you will not push it down, right? मैं procrastinate करती हूँ, it's okay, मुझे पता है, पर मेरा काम टाइम पे खत्म होता है ना. So what? मैं अपनी प्रायोरिटीज कर पाती हूँ उसके साथ,
10 दिन तक मैंने प्रेशर नहीं लिया आज की प्रेजेंटेशन का। कोई और होता वो पूरे 10 दिन ये प्रेशर लेता तो क्या बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर लेता, क्या कर लेता वो। What I did it from my heart. That's it. Wow, Yeah. great. Thank you so much. Thank you so much, Induji. Yeah. Now we come to विजय जी। विजय जी से मेरी बात हुई थी और विजय जी ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगी। It is very deep in the sense that it has lot of things involved in it. You have talked about so many past life regressions, so many cases. What do you have to say about afterlife? जब इंसान की जब ये शरीर छोड़ देता है इंसान, तब क्या होता है? Because you have done so many PLRs, maybe you have the inklings, you have the enlightenment about what happens after life. जब भी हम पास्ट लाइफ सेशन रिग्रेशन करते हैं तो वी ऑलवेज टेक द पर्सन टू लास्ट डे ऑफ दैट लाइफ टाइम, जस्ट बिफोर द soul leaves the body, very last day. We say, go back, tell what's happening, and then when the soul leaves the body, that the actual real home is there. This is not a real home. ये तो एक ट्रांजिटरी फिनोमेना है। हमारा असली घर तो कहीं और है, असली घर तो कहीं और है। तो आत्मा ने तो वहीं जाना है ना, जहां से आई है वहीं जाना है, हम सब ने वहीं जाना है। तो हाँ, हमारे सारे संस्कार जो हमने जन्म में लिए, जो डिसीजन लिए, अच्छा काम किया, बुरे काम किए, वो सब हमारे साथ जाते हैं। बाकी तो खाली आता है, खाली जाना वही जाना है बस। मैंने जब बताया कि 5 बॉडीज हैं, every emotion gets recorded there, goes with our soul. Every learning we have done goes back with us. I would like to tell you something very simple. इन्होंने जो इंदू जी ने बात बताई उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। मैं एक छोटी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे, आप लोग करना चाहेंगे? Yes, please आराम carry से on. बैठ जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, and put your right hand in the center of your chest. Just put your right hand in the center of your chest. Just close your eyes. Just watch your breath for a couple of moments, for next 4-5 seconds. Just watch your breath. Focus on the breathing. Now, very lovingly, although you're going to say from your mouth, या आप मन ही मन बोले, पर कल्पना करो कि आप दिल से बोलने जा रहे हैं जो मैं शब्द बोलूंगा। बड़े प्यार से बोले अपने आप को, I love myself. Say it second time. Third time. Fourth time. One last time. Just keep feeling what you feel in your body. Just keep your eyes closed. We'll move to the second part of the exercise. Exercise in 2 parts. All of us have been, our body has been working from the time we have come into this world flawlessly. हमारे साथ कोई बंदा, कोई अननोन बंदा कोई अच्छा काम करता है, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। कभी आप लोगों ने अपनी बॉडी के पार्ट से बात करी, उसको धन्यवाद दिया? यस और नो? नहीं किया। The time has come to thank your body. Just keep your eyes closed. We move to a second part of the exercise. Keep your right hand in the center of your chest. Just say to yourself very lovingly and feel the gratitude coming from heart and moving to every part of the body. I thank myself for this day. मन ही मन 5 बारी बोलिएगा। जब खत्म हो जाए मुझे बताना। Then I'll tell you what is the theme behind it. The crux behind the exercise. Take your time. जब 5 बजे आके खोल लीजिएगा। I feel really, I felt the energy flowing in. मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ इसका मकसद क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी डूइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्शियस माइंड को चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम। देखो हम कर क्या रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है, राइट? Which keeps the Yes. body alive. You agree with all of you? Agree? Yes, sir. Atma is part of Paramatma, right? Yes. When I say I love myself, besides saying to myself I love myself, I'm telling part of the God divine in me that I love you. कोई दिया और बत्ती नहीं जलाना है। Similarly, when I say I thank myself for this day, मैं अपने आप को भी धन्यवाद दे रहा हूँ, उसको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। And let me tell you another thing. What happens with this? You start accepting yourself the way you are instead of all the negatives Induji was saying. Because you're retraining your mind, new neurocircuits are getting formed, you're accepting yourself the way you are. When you stop judging yourself, you stop judging other people around you.
Do this exercise without a gap for 1 month. You will see the difference. People around you will tell you something in you will change. I taught this exercise to tens of thousands of people, a beautiful result. I've been doing exercise for the last 14 years. Every day, without fail, at night I do it. Before I go in bed, when I'm lying down, पीठ के बल लेट जाता हूँ, आंखें बंद करके, right hand center of chest, 5 बारी, I love. बड़े प्यार से बोलना है. Feel it coming from heart, दिल से, मुंह से नहीं. Similarly, 5 बारी I thank myself. आप you are retraining your mind. As Indu ji was saying, वो जो कमी है हमारी, उनको उसको देखो, हम सब में कुछ प्लस माइनस है, राइट इंदु जी? हमें देखना है पॉजिटिव क्या, उनको ऊपर लेके आना है ना. यही काम कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज से भी. बट दिस वी आर डूइंग एट द मेंटल लेवल. और बायोरिदम ये कहता है कि जो एक्सरसाइज को हम 1 महीना के करीब कर लेते हैं तो हमारे बॉडी रिदम में समा जाता है. तो मैं बोल रहा हूँ 1 महीना करना बहुत जरूरी है. करके देखना, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ ब्यूटीफुल इट इज. Thank you so much. Thank you so much for a beautiful, beautiful experience. And yes, Sonal wants to ask something, and after that, I think so. Sonal Arvind Bedi, also good. wants to ask something. Sonal Bedi, how did you feel when you were saying the words? फर्स्ट टाइम भी मेरे फेस पे स्माइल आ गई थी. When I said I love myself, मुझे तो पहली बार में बहुत अच्छा लग गया था. 5th टाइम तक तो I was in some other place, and when you said the point कि is made you feel good. It within couple of seconds it made you feel good, right? So एक चीज मुझ में चेंजेस आए हैं मेविन ज्वाइन करने के बाद. See, I have a problem with my left eye. तो मैं हमेशा ना लाइफ में बोलती थी कि मेरी लेफ्ट आंख कमजोर है, लेफ्ट आंख कमजोर है. मेविन ज्वाइन करने के बाद वो जो एक पॉजिटिव अप्रोच आता है, मैं हमेशा लेफ्ट वाली आंख को ज्यादा प्यार देती हूँ कि अरे यू आर माय फेवरेट वन. सो आई गिव मोर लव टू दिस वन, कि मुझे ऐसा लगता है ये वो वाला बच्चा है जिसको अटेंशन ज्यादा चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट when you said na you have to express the gratitude also, that time I was like हाँ ये तो मेरा favorite काम है. I know that. Yes, it was a beautiful experience. यही तो प्रॉब्लम है. ओशो भी ये बोलता था, हम अपनी बॉडी को कभी कभी बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट. यू टॉक टू योर बॉडी, इट टेल्स अस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट, हमें बताती है बहुत कुछ. हम कभी उसको धन्यवाद नहीं देते. आंखें काम कर रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, हार्ट चलता है, कान है, जबान बोलती है, सब कुछ है, पर कभी धन्यवाद नहीं दिया. ये सो थैंकलेस. Really sorry. I'm sorry to say. जो नेचर ने हमें दिया उसका हमें केयर ही नहीं है. जो हमें मिला उसकी बाहर की तो भूल जाओ एक सेकंड के लिए. हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को क्या कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं. जो उसने हमें दिया हम उसका भी केयर नहीं करने को तैयार है पूरी तरह. हमें सफाई करनी है अंदर से. सुबह उठ के ब्रश करके नहा के सफाई करनी है अंदर से अब अंदर से सफाई करनी है. सॉरी, I have a question for you, ma'am. Yes, please, Sonal. अच्छा, आपने जो 2 पॉइंट्स बताए थे जिसमें, और एक्चुअली ये थॉट मुझे जब आप वो रोहित और पारुल वाला एग्जांपल बताए थे तभी भी आया था कि यस, अपब्रिंगिंग कितना मैटर करती है इन लाइफ, स्पेशली फॉर गाइज. आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड I must say that I'm really thankful for the upbringing that has been given, कि उसे ऐसा नहीं बोला जाता कि लड़के नहीं रोते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं. एंड मैं हमेशा इस चीज को बहुत बोला करती थी कि नो, माय ब्रदर टॉक्स, ही इज एन एल्डर ब्रदर बट ही स्टिल एक्सप्रेसेस. देन आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज लाइक नो दिस इज नॉट राइट, कि नहीं ऐसे ये सब बातें नहीं करना चाहिए, ये लड़कों को सिसी बना देते हैं. सो आपने जो एक सेकेंड पॉइंट बोला, एक था कि हमें अपनी क्वालिटीज लिस्ट करनी है, और एक है कि आप दूसरों का जो ट्रिगर पॉइंट होता है. अब दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी बिकॉज अब वो किसी और का थिंग है, बट इट जस्ट केम इनटू माय माइंड कि अगर किसी में ऐसी क्वालिटीज हो जो आपको ऐसा लगता है कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग थिंग, लाइक यू सेड कि आपको ये समझना है कि उसे इससे क्या मिल रहा है, व्हाट बेनिफिट दैट पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन वाला थिंग, कि भाई फॉर अ गाय ही शुड नॉट एक्सप्रेस इट. सो उसको तो वी शुड कंसिडर इट कि एक्सप्रेस नहीं करके उसे क्या मिल रहा है, और वी शुड कंसिडर कि दिस इज दी अपब्रिंगिंग का थिंग, कि यार मे बी बचपन से उसको ऐसा बोला गया है. बिकॉज इवन आई बिलीव इट कि एट टाइम्स वो जो एरोगेंस लोगों का होता है ना, इट इज समवेयर वो उनका फियर, कि वो ऐसा बाउंड्री वो बना लेते हैं कि भाई मेरे से पंगा नहीं लेना, मुझे बोलना नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है ऑफ कन्फ्रंटेशन. सो इट ऑलवेज कम फ्रॉम सम अदर दबा हुआ थिंग. सो इफ दिस थिंग इज देयर, सो हाउ शुड वी टेक दैट, कि जब जैसे आपने कहा कि उसे क्या बेनिफिट हो रहा है आप ये देखो. सो वेदर वी शुड सी कि यार ये जो एक्सप्रेस नहीं करने वाली चीज है इससे उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, और वी शुड लाइक अंडरस्टैंड कि मे बी बचपन से उसे बोला गया होगा कि नहीं लड़के नहीं एक्सप्रेस करने हैं, या वो गाय शुड बी लाइक दिस. जैसे मैंने ये तो बंदी कर दिया है, सुधारो,
पार्ट वाला जिंदगी है कार्यक्रम, खुद ही पे काम करने बहुत बड़ी बात है. So that is not I am talking about. It is just that to understand a thing कि अगर ऐसा कुछ होता है then how we should take it. Sonal, the question here is, what are our shadows? Right. अगर एक्सप्रेशन उनका शेडो है, जो कि नहीं है इस केस में, आपके ब्रदर के केस में एक्सप्रेशन उनका शेडो नहीं है एज पर यू, वो एक्सप्रेस करते हैं. Right. ठीक He है? does. Yeah. तो अगर उनका एक्सप्रेशन एक शेडो होता, लाइक अदर गाइज, एज यू सेड के कुछ और लोगों से आप मिले एंड ही सेड कि नहीं ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? Yeah. अब उनका जो, तो उनके लिए ये बात है कि उनको ये समझना है कि एक्सप्रेशन को क्यों दबाना है, लाइक what are the gifts which expression can give them. Right. Exactly. तभी तो वो अपनी शेडो को बाहर लेकर आएंगे ना, शेडो पे लाइट तो तभी डालेंगे ना जब वो शेडो को पॉजिटिव लाइट में देखेंगे, True. True. राइट? Yeah. हाँ, तो इसलिए तब उनको ये समझना है कि वो, दिस इज फॉर दोज बॉयज हु सेज दैट एक्सप्रेशन इज नॉट गुड. How And can we even वो express? ऐसा सोचते हैं कि you should not encourage Right. guys to express, Yeah. which is very strange for me. So मैं Yeah. ऐसे किसी को So जाती they हूँ कि need to हाँ, understand what gift expression can give them. yeah, true. I think Harmeet wants to add something over here. Yes, Harmeet? So I have a small, very interesting listening to Induji, and I'll just take a very quick few minutes. So, when I was dating my wife way back in the 90s, so, she asked me this question. She says, if there is one or couple of things that you would like to change about yourself, I said, well, nothing. I don't want to change anything about myself. I said, because I'm made of the plus and the minuses. Yeah, and for me, everything is a plus. Somebody might see it as a negative, but that's a God-given thing. So I'm not going to change anything. And one of the examples I said was that, listen, my whole being is a beautiful car. At different points in the life, you learn to drive the car in a very different way. So if something goes wrong on the road, don't blame the car, blame yourself as a driver. So I am very aggressive. I consider myself as a super alpha guy. And when I was in my 20s and 30s, the the impatience worked wonderfully well in my career. But it might not work very well in the other arena. So when I was getting into my 40s and now touching 50, I'm still not willing to change my aggression. It's just that now I know how and where it comes. And so I remember about a couple of days back within my colony, one of the doctors asked me, he says, Harmeet, you've become very spiritually inclined and everything. To tera gussa kam ho gaya? I said, ji, bilkul bhi nahi. Bole matlab? I said, I've just learned to deal with I've just understood which idiots to engage with and which idiots not to engage with. So that kind of shut him. So, I said, मुझे पता है किस बेवकूफ के साथ कितनी बात करनी है और किसके साथ नहीं करनी और किसके साथ कितनी करनी है. तो I said, maybe I would not have given that answer 20 years back and I would have got offended by your question, but I'm giving you an answer with a smile on my face. Now, if you're smart enough to understand that answer, good. If not, then, I'm going to go away and you're going to be living in a mental dilemma ki isne bola kya. And Meenuji, I'll just take 30 seconds more to kind of, say a poem which I came across, and if you allow me. Sure, so the poem is called The Monster. So it says, I don't walk away from situations. I don't walk away from adversity. I don't walk away from battles. I don't walk away from love. Faced with reality, I keep back what has been inside because I'm a monster. I have no fear. Then the person says, I walk away. First he says, I don't walk away. Now he says, I walk away because I don't fear the repercussions, but rather my own actions and emotions. I walk away from problems not because I'm wary and fearful, but because I've learned to see it as a training for me to keep my monster buried inside. I walk away from a fight not because I fear losing, because I have no fear. I walk away from love not out of selfishness, but because the monster has no regard for suffering and loss. The monster in me keeps me disciplined, energetic, aggressive, and concentrated. It does not understand good, bad, or ugly. All it understands is something has to be done, then it is to be done. It makes me very loving, but it also makes me very dangerous. Wow. Thank you for sharing. And this was something I wrote over a cup of coffee about myself. Oh, wow. So when I heard Induji, and the first person I had shared was actually Nupur ma'am. And I said, you know what? I understand who I am. Yes. Okay.
in many ways, I feel I'm a monster. I know there are many things lying in which, if get triggered, will be very difficult for other. So I don't, when I walk out of situations, it's not because I'm afraid of them. It's just I'm afraid of the consequences for the other person. So that makes me more mature, not to go into that. And I say, okay, let me just walk away. Yeah. Not because I fear the confrontation. I don't want the confrontation. I don't want to confront because I know the outcome in a way. So this whole thing was actually more about that. So this is my two bits. Thank you. Okay. Thank you for sharing that deep insight about you so yourself. Thank you. Thank you, Mary. Sonal, you want to ask something more or comment anything more? That's it. Okay. So I think we're done. Anybody else would like to say or ask anything? Yes, I think that's it. So there's a very beautiful comment. I think Arun Katiaji has written, would you like to come on screen and share it with us? No. Yes, Arun. Sorry, ma'am. Yes. You're asking me something? Yes, I'm asking that you've written a very beautiful comment in the chat box. So would you like to Have I? personally say it? I didn't realize I've written something. No, I don't think I've written anything. I don't think. This was for Arun. This was for Arun, not for you. Arunji. I think your audio is not coming through. I think we'll have to read and make do with it. His audio is not coming through. He's trying his best, but I think Network issue. हाँ जी, आपका audio नहीं आ रहा. Maybe can I ask a question? Sure. Thank you, Arunji. We'll read it over there now. Thank you. Arunji, please remove your earphone. Mute. If you remove your earphone, we can hear you. You hear me now? Yeah, now. Better. Okay. So first of all, I want to extend my thanks to Meenuji for introducing me to this platform. And I have been having these feelings repeatedly. I have, of course, apart from the regular faces that I see here, Sandeepji, Atmaji, and Meenuji, and of course, Dr. Nupur and all. Apart from them, whoever the presenters who were here, I somehow felt like I shared a special bond with them all. It was like I'm not meeting you guys for the first time. And I was just wondering when will be the time when all of us will come together physically also and meet each other. I would look forward to do that. And this feeling, maybe someone can throw some light on why am I feeling like this. But I feel that I've been a part of this family earlier. And all of you have been friends to me. Thanks a lot. Can clarify that. Why are you feeling connected to all of us? That's magic of Mavin. Yes. Maybe. Maybe not beautiful magic. Yes. So thank you so much, Arunji, for sharing that. Truly obliged for it. Yes, Sheetal, you wanted to ask a question? I wanted to ask a question. It's from Vijay, sir. Sir, there's one thing it's like going on in my mind. If you're deprived of something in one life, it could be your wealth, it could be your respect, it could be anything. If you're deprived of that thing in one life, and in next life that dies with you, that idea dies with you, right? Then in the next life, you like want to claim that thing again. So the way you claim it, does that count? I mean, rightly, or for example, if it is wealth, if someone has taken your wealth in the last life, and in the next one, you want to claim it again from that person, you want your wealth back. So the way you go with your actions, does that count? I mean, rightly or wrongly? We can rob also. Anything can happen, right? You can do in a legal way also. So the way it goes. देखो, the point is कि देखो जो भी कोई the cycle continues from lifetime to lifetime till you learn from it.
Let's understand that what it means. जैसे मैंने आपको I was showing giving you example कि मैंने किसी ने मेरे से पैसे लिए, उसने दिए नहीं, तो मैं I go back with the thought कि मुझे उसे वापस लेने, मुझे उसके साथ next lifetime में आना पड़ेगा. But the point is, if I treat it that way कि हो सकता है कि पिछले जन्म में क्यों मैंने इसके देने होंगे, इसके मैंने दे दिए, my karmic debt is over, I have finished it. That guy may have started a new karmic debt. That universe will take care. Like that lady, a case I told you, वो तमंचा दिखा के पैसे वसूल करता था, Right. दूसरे तो इस जन्म में उससे सब ले रहे थे. तो हाँ my जी. I didn't create any karma when I have that feeling. अरे मैंने इसके देने होंगे पिछले जन्म के, मैंने दे दिया, खत्म. My karmic debt is over. Right. But that person, maybe that was the first time he started doing this. Usko universe will take care of it, because see, the point is, if I do something bad to you, आपको पता भी नहीं मैंने आपके लिए ओके कुछ बुरा किया, तो मेरी अंतरात्मा को तो मालूम है मैंने आपसे बुरा किया, right? The punishment is given. I give punishment to myself. My soul gives punishment to itself. That's the beauty of it. This concept is very difficult to understand. There is no कोई वहां नहीं बैठा है जो हिसाब किताब रख रहा है. हम खुद अपना हिसाब किताब रख रहे हैं. The soul decides to go through whatever it wants to go through in the next lifetime. आने से पहले जैसे मूवी बनती है, पूरी सोल स्क्रिप्ट बनती है. Before we come here, पूरी सोल स्क्रिप्ट बनती है हमारी. मूवी की स्क्रिप्ट बनती है ना, and with our guides कि ये काम करेंगे, ये नहीं करने हैं, या जो भी है. Various plus, like okay, branches of the tree. So everything is pre-planned. आप किससे मिलना, किस जन्म में कौन आएगा आपकी लाइफ. एक बात याद रखनी है हमें. Any person who brings the challenge in life, actually the person is a teacher. He's come to teach us something. Let's remember that. Unfortunately, we treat it differently. We say, it's a problem create kar di. No. Think back. That person has come to teach you something, and he's a teacher. Yeah. And what's the respect due to a teacher, right? Same respect to be given to the person. Beautiful. So actually, it's in our hands. Like if you want to put an end to a cycle, I'll tell you right? what With happened. forgiveness and everything, whatever, Exactly. right? बिल्कुल ठीक कह रहे हो. That's why I tell people, for giving to yourself, the best gift is forgive. So just let it go. Word. What happened for the right, just let it go. Exactly. Forgiving is the best thing we can do. When I forgive somebody, Yeah. I gain more than the other person जिसको मैंने माफी के नाम में किया है. जब मैंने उसको माफ Okay. किया है, तो मुझे ज्यादा फायदा रहा, उसको कम हो रहा है. याद रखना है बात. How Okay. sweet. Okay. हम सोचते हैं कि अरे मैंने इमोशनल चार्ज उस सिचुएशन के साथ निकाल दिया ना, forgiveness Right. करके. Right. Forgiveness is both ways. There is a very, even in the sessions we do, by the way, this process consists of a number of things. One is, I like to tell you something, inner child healing. I do a lot of work in inner child healing. It's with amazing results. क्योंकि बच्चा जो है उसको पता नहीं है माँ बाप ने क्या उसके साथ किया, क्योंकि माँ बाप ने वो किया basically based on mental and emotional resources, financial resources they had at that point in time. They always try to do the best for the child, but the child doesn't understand, keeps carrying the baggage. मुझे गुस्सा है, तो हम inner child healing करते हैं, ले जाके उसको तो फिर शेडो integrate वर्क करते हैं. में शेडो वर्क का पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग ऑल आर पार्ट ऑफ शेडो वर्क. Okay. बट द थिंग इज कि अभी हम यहाँ पे इस सेशन के उसके हिसाब से ही मुझे उसको प्लान करना था. बट यस, अच्छा, दीज आर द अच्छा ठीक है. मैं तो वैसे इन्होंने बात उठाई तो बता रहा था कि मैं when we take Inner session child is physical, what we say childhood trauma, that only is inner child. बेटे हम सब में एक बच्चा है. हाँ, हम मतलब वो अगर खो देते हैं, हम वो खो देते childhood हैं. trauma को ही हम बोलते हैं inner child healing. हमने उसको हम खो देते हैं कहीं पे, हम उसको इंटीग्रेट करना है विद द प्रेजेंट मी. Okay. The inner child is always ब्यूटीफुल there. एक्सरसाइज, वेरी From that पावरफुल. आप point, इनसे कराना है, इंदू से करा देना, मेरे से कराना, मेरे से करा लेना. इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी पावरफुल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो कहानी सारी ये है कि उसमें मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अगेन IIT इंजीनियर, मेरे से छोटे हैं 8 साल. उनको रात को 1:30-2 बजे की बात है, हुआ कि उनको he saw the creator came, I'm giving you all the powers, you can do anything with these powers, but remember all conflicts can be resolved through love. That's the main line that was told to him by the creator. Next scene was shown to me. There was this boy about 13-14 साल का था. There was a party going on, everybody is enjoying. This kid अकेला खड़ा हुआ है, वो नीचे गर्दन ऐसे करके. This guy gets attracted and goes to him. इससे भी क्या हो गया? You're not enjoying the party. Your parents are not here. He said, mother is here, but my father is not here. Then he says, what happened? Why are you not enjoying? He says, I've been sexually abused. He says, the person here, he says, no, he's not here. He takes him next room. He says, okay, would you like me to call him here? So God had given the powers, he calls this other soul. He said, he's the guy.
He said, what would you like me to do? I want you to kill him. He said, what will happen? I'll feel very peaceful and calm. He said, why don't you forgive him instead? He said, no. How can I forgive him? Because this is what he's done to me. He says, would you like to see what will happen to you in the next lifetime? He said, look at the TV there. Next lifetime, the roles are reversed. The next lifetime, roles got reversed. The next lifetime, roles got reversed. Then this guy, again he asked him, this child, what would you like to do now? He said, I like to forgive. उसको माफीनामा करके चले जाता है. आगे सुनो क्या हुआ? This is part of the story. This is the best part is yet to come. But this guy, other person, he says कि then he asked him, now what will happen to you? He says, जैसे भगवान ने आज उस बच्चे के लिए आपको भेजा, अगले जन्म में मेरे लिए भी किसी को भेज देंगे. मेरे को मुक्ति, क्योंकि जो मैंने किया मुझे भुगतना तो पड़ेगा. क्या मेरे को भी मुक्ति मिल जाएगी. How sweet. Amazing. So all this is a very long, it's a session. What happened? This happened during COVID time. This guy had this experience. So I have a recording somewhere. It's about 30 minutes audio because we couldn't meet. It was in July 20 की बात है, July August 20 की बात है. I have a recording. Any one of you want to listen to this? It's just about karma. The information of flowing from the other channel from the universal guidance that time, and he talks beautifully about all this. इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि चलिए ठीक है, सारा पास्ट लाइफ का हो रहा है, पास्ट लाइफ की वजह से ये होता है, आज की लाइफ से हमारे आगे की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है. आप ये बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इस जो चक्र होता है ना लाइफ टाइम का, आने जाने का, उससे कैसे मुक्ति मिले. देखो जी, देखो साइकिल क्या है. हाँ, मुक्ति की बात करें, साइकिल क्या है? बर्थ, ग्रोथ, डेथ. ग्रोथ ऑफ द सोल, राइट? आर वी रियली ग्रोइंग? That's something each one of us know. अपने आप से सवाल करो ना. मेरे पास उत्तर नहीं है किसी के. अपने आप से सवाल करो. What are you doing? Right. Are you moving on the right path? There's guidance क्या है? इसकी guidance क्या है? आपने कहा ना अपने आप से सवाल करो. So the moment I asked you that question, what came to my mind was कोई कारण होगा. So that was the answer. कोई कारण नहीं. आप उत्तर आपके अंदर है. देखो उत्तर मेरे पास नहीं है. Yeah, because we are not supposed to conflict with the flow of the universe, right? हम हर चीज से लड़ते रहते हैं. So कोई कारण होगा ना, तो this has happened, right? मेरी बात सुनो. हिंदी में पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल, right? Yes. Consists two words, भूत and काल. Bhoot means ghost, right? Kaal is mrityu, death. Such a thinking word. And what is future? Modified past. Okay. Modified past. छोटा घर है, बड़ा घर. छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी. कम पैसे है, ज्यादा पैसे है, right? When you finish the past, उसकी foundation तोड़ दी है, तो future also finishes. Then we live in this moment. Present, which is a gift. The word present is a gift also, right? It's a gift from you. That's how we create life. आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो, क्योंकि ये पल भी जाने वाला है. ये गाना है ना? Famous song. सेशन अटेंड करके मेरा सत्यानाश हो जाता है. फिर फॉरगिव करो. ये अच्छी चीजें आने लगती है. फिर अब हमारे जाने का भी वक्त आ गया है. हाँ, बहुत देर हो गई. चलो ये तो मतलब सुनते रह सकते हैं, सारी रात बातें कर सकते हैं इसको. We have to remain within those constraints. It's almost 11. So Sandeep, a quick word for the next time होगा तो so much of guidance with some of the wisdom that came through. I've got it written down somewhere. I would like to share with you. We'll love to have you again, sir. We can some other time we can do it because it is unbelievable. देखो मुझे खुद नहीं समझ आती थी. मैं शुरू में सोचा जब मेरे साथ हो रहा था कि am I going mad? Engineer, totally different person. Right? हो क्या रहा है मेरे साथ? ठीक. चलो आपको फिर दोबारा सेट करेंगे टाइम. Thank you very much. Thank you. Good night everybody. बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Indu ji. Thank you Indu ji. Thank you so much. Thank you. Yes, Sandeep ji, if you would like to say a quick word about the reflection part. Yes. आज मेरे पास कोई वर्ड नहीं है क्योंकि long wait for संदीप जी. क्योंकि इतने अच्छे तरीके से विजय सर और इंदु जी आपने बताया, तो वो सारा रिफ्लेक्शन ही है एक्चुअली अगर देखा जाए. सिंस यू स्टार्टेड इंदु जी द सेशन, दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन. तो मेरा आज का यही क्रक्स है कि जो बात इंदु जी ने शुरुआत में बोली थी वो मैंने नोट डाउन कर ली है. आप भी कर लो. और मैं वर्बिटम नोट कर लिया है.
And I'm going to start this doing no, if on a immediate basis में start करने वाला हूँ, तो ये लोग ये आप भी करना है आपने. So इंदु जी ने ये बोला था, list out all your qualities, either positive or negative. Yes. So that is your reflection. So start doing it from today itself. That is number one. और उस negative quality को how it is helping you. So that is the reflection part of it. Reflect करो आप how it is helping you, and also your trigger point from for others. उसके लिए वो shadow work कैसे कर रही है, best for him, right? That's what Indu ji said, right? So यही करना है. So that start reflecting it. For others also trigger point आपके क्या है, और आपके जो अपने लिए आपके trigger points क्या है, that is also needs to be reflected on. That's all. Thank you so much. We'll meet tomorrow again. आज टास्क बहुत इजी हो गया संदीप जी. Thank you, Sandeep ji. Bas I'll send you on the video also. Yes. one more thing I would like Yes. to add, and then we can finish. Yes, Actually, Sandeep. it is not very easy. It sounds simple. Yes. अपने Yes. ट्रिगर्स ढूंढना, और ये जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, महीनों लग जाएंगे आपको अपने ही ट्रिगर्स ढूंढने में. रोज बिल्कुल. ट्रिगर होते हैं हम, Very लेकिन true. अपने ट्रिगर्स को नोट डाउन करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर. अब करके बिल्कुल. देखना इस एक्सरसाइज को. इसीलिए हम तो मान- लिखते इसीलिए तो समय करना है. मानेंगे नहीं ये ट्रिगर है मेरा, और हाँ. ट्रिगर रोज हो रहे होंगे हम उससे. बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए तो ये करना बहुत मुश्किल है ना. इसलिए स्टार्ट तो करें, कम से कम कोशिश तो करेक्ट करें. करेक्ट. राइट. और दूसरा, बिफोर आई टेक ए लीव, विजय सर ने ये जो एक्सरसाइज बताई वो थैंक यू वाली, थैंक योर बॉडी, थैंक योर Yes. बॉडी एवरी डे. Beautiful. Right, that is also no, part of the reflection. Okay. So let's start doing it, guys, together. We'll make the difference. Yes. Thank you. Even. Okay, thank you. Good Thank Thank you, you, thank everyone. you. Thank Thank you, you, all Indu. wonderful Ma'am, good speakers, night. Indu ji, Vijay ji, and thank you so much, Sonal, for your beautiful company this evening.